था कि कल जो लाइव चल रही थी ना, अंजलि एंड सूरज वर डूइंग अ लाइव, मैं ज्वाइन कर लिया and then they requested me also to join the live. I also joined the live and then KSP sent me a photo where मयंक, KSP, आई थिंक मेहल एंड 2-3 लोग और थे, वो लोग स्क्रीन शेयर करके एक साथ में बैठ के मीटिंग में इंस्टाग्राम लाइव देख रहे हैं। मैं बोला ओ भाई ये क्या इंसेप्शन चल रहा है, ओहो मजा आ गया। Actually, मैंने मैं बोला और मैं हम लोग ना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करके रखे हैं, बट मेरे लैपटॉप में ओहो इंस्टाग्राम ना वो क्रोम ब्राउजर में डला हुआ है। तो हाँ इसने हाँ तो कुणाल ने बोला कि ये लोग मीट कर रहे हैं, तो मैंने हाँ क्रोम ब्राउजर पे हाँ खोला कि क्या बात चल रही है। तो मेहल हाँ, बोलती सब है कि अरे मैं तो इंस्टाग्राम में नहीं डाले हूँ। मैंने कहा चलो ब्राउजर में खोलता हूँ, फिर बोलिए मैं कैसे देख देता हूँ। मैंने कहा चलो मीटिंग पे सेंड देता हूँ। हाँ हाँ। हाय सूरज आ हम गया, लोग हाय सूरज, एक से हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। तो मैं इनको यही बोला था, यस्टरडे व्हाट हैपेंड इज अपन लाइव पे थे ना तीनों, तो ये लोग महारथी लोग, इन्होंने 4-5-6 लोग पता नहीं कौन ग्रुप में बैठ के ये लोग गूगल मीट्स में मीटिंग में गूगल क्रोम के थ्रू इंस्टाग्राम खोल के, इंस्टाग्राम का लाइव खोल के मीट में सब लोग बैठ के अपना लाइव देख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया क्यों भाई, इंस्टा क्यों अनइंस्टॉल कर रखा है तुमने? अच्छा, वो डिस्ट्रैक्टिंग है। यप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। So, प्रोडक्टिविटी hi लूज होती है। Suraj, thank you so much Suraj for taking time out from your busy schedule at IIT Bombay. I know you have too much work. कल भी भाई Hey, लाइफ के टाइम पे भी काम ही कर रहा था, तो I know there's too much work, but thank you so much for doing this. There's 1 week left for CEED, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग CEED दे रहे हैं, सब लोग NIT देख चुके हैं, and obviously you are the one and only all India rank one. There's another one and only all India rank one, Anshumman, who's going to join in around 15-20 minutes. He's on the way home. So I okay. wanted to bring two all India rank ones together and make it like a star-studded panel of Shah Rukh Khan and Salman Khan together. Oh, okay. ताकि It's just a one-time thing. Next year, someone else is going to come. Okay. हाँ तो वो ऐड होते जाएगा ना, ऐड होते Okay. जाएगा, KSP हाथ ऊपर करेगा अपना, यस नाइस नाइस, आई लाइक दिस मोटिवेशन, वेरी नाइस, तो हाँ Hey, ऐड this is होते Bole जाएगा Para. क्या। I remember this name. I can't ever pronounce it. Stirp Langda. I know अरे you यू meant एक्चुअली मेड Kolepara. हिम वायरल। यू एक्चुअली मेड हिम वायरल। था How? पकड़ा। मेरा जो फैन वाला स्केच है ना, उसमें एग्जांपल ले रहे थे कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, मैंने नाम नहीं लिया तुम्हारा। एक्चुअली नाम नहीं लिया। अबे घूमेगा कैसे यार, वो तुम बना दी अरे इतना वो मैं सुंदर स्केच। एक्चुअली रील हो जाएगा ना, ये वाला वीडियो जब जाएगा यूट्यूब पे। ओ नहीं यार, डिलीट कर देना यार, क्यों किसी का नाम लेना पाते हो। नहीं ये जाएगा जाएगा। तुम जानते नहीं कितने बुरे स्केचेस आए हैं उस ग्रुप पे। मेरे को लगा कि हर ग्रुप बनाएंगे ना, देयर इज नो कम्युनिटी वेयर वी शेयर पार्ट बी आंसर्स। सो आई क्रिएटेड अ ड्राइंग स्पेस वेयर एवरीबॉडी जस्ट शेयर देयर आंसर्स एंड क्रिटिक ईच अदर। अच्छा ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम ओनली। हाँ तो उस पे कोई पार्टी डिस्कशन नहीं होता, कोई नंबर वंबर का गेम नहीं है, वहां पे सिर्फ ड्राइंग्स भेजते हैं लोग। हाँ सो आई डिड दैट। तो मेरा फोन भर गया ब्रो। I feel you, हाँ गंदे ड्राइंग्स भर गया ब्रो फोन, है ना। बस वही मैंने है। भी स्टार्टिंग में अपना टेलीग्राम डाउनलोड सेव टू फोन ऑन रखा था, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ऐसे ही ड्रीम टीम में लोग फोटो भेजते हैं, सब मैं फोन में मीडिया डाउनलोड। यस अभी मेरे सारे अच्छे इलस्ट्रेशन साइड में सिर्फ स्केचेस दिख रहे हैं उसमें फोन में। गैलरी चालू किया तो ये बड़ा अच्छा है, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, a space for everybody to come and just share your एक्चुअली वो फैन वाला जो स्केच था ना, वो एक्चुअली एग्जांपल की तरह ऐसे आइडिएशन भेजा, किसी को आइडिया नहीं आ रहा था, कोई लड़की पूछ रही थी कि कैसा करना है, ओके। तो वो फाइनल स्केच नहीं था वो। डूड यू हेल्प मी, कैसा नहीं करना तुमने बता दिया। तो मुझे भी हेल्प हुआ ना कि क्या पॉइंट रखना क्या चाहिए। ओके गाइस, इनफैक्ट उस वीडियो पे तो किसी ने कमेंट किया मेरा खुद का डिजाइन फंक्शनल नहीं है। तो मैंने बनाया, है ना, है ना। वो 20 मिनट में खत्म कर दिया, बट बाद में पता चला फ्री के पेट्रोल पंप के पाइप जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, होता है भाई, होता है सबके साथ होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 लोग, आई वाज वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स कि लोग ज्वाइन कर ले, ऑलमोस्ट 100 लोग हैं यहाँ पे। So that's how we're going to do this, guys. Last year, like I told you,
I don't want to be the party pooper. मैंने लास्ट ईयर के पॉडकास्ट में सब मैंने क्वेश्चंस पूछे थे. इस बार मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जो एस्पिरेंट्स है. So let's make it a systematic approach. You've got 1 hour of Suraj and maybe half an hour, 45 minutes of Anshuman also. Please utilize this time well. And अपने जितने भी questions है, don't put it in a chat box. I just put your name in the chat box if you want to ask a question. Line by line, जिनको भी questions है अपना chat box में नाम डाल दो. I will just take your names. You guys can unmute and talk to Suraj. Ask him whatever you want. Because All India rank में आना कोई बच्चों का खेल है नहीं. It's taken a lot of effort, I'm sure. So there are lots of things that Suraj can help you with. I also think a lot of people have questions related to your videos also. क्योंकि जो videos में चीजें बनाई है ना, उनके भी basis पे लोग को questions है. So हाँ, जिनको questions है, please, yes, you can start with. Yeah. Yes, Kairneya. Hello. So I had this one question. Like in your previous meeting, you said that we should pick some of the general character and use those character to sketch other character because it's and I also asked that question where I can use Gauri and Rohan as a if you remember. Yeah. So I'm having difficulty finding those particular characters because there is not much character which is like inclined toward the Indian form and how people of India look. They are mostly the Westerns. So if you can share some of those sources where There I are can so pick those many generic Indian characters. artists. I would No, but really love to share. Yeah, yep. I would. So I just want good reference because I'm not getting some of it. Like if I saw Fani sir's sketch, they have just a little bit of that. So I cannot just I'm just struggling with taking those attribute and making it generalized. So that is one difficulty that I'm facing because I don't want to mess up with the things like 10 piece अलग अलग character लेके चले गए और फिर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं and then wasting the time. और एक तो वो था और दूसरा ये था कि लाइक जो इलस्ट्रेशन वाले मैं हैं. भूल जाऊंगा. मैं भूल जाऊंगा. एक मिनट. तुम्हें मैं आर्टिस्ट के नाम भेज दूंगा. देखो इंडियन आर्टिस्ट के साथ दिक्कत क्या होती है ना, वो टेक सेवी नहीं होते. वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं कोने में कहीं, तो उनका काम प्रोपोगेट नहीं हो पाता, पहुंच नहीं पाता. तो इंस्टाग्राम पे भी तुमको बहुत सारे लोग इतने दाताद में नहीं मिलेंगे जितने वेस्टर्न मिल जाएंगे. ओके, तो तुम्हें चाहिए इंडियन लुक एंड फील वाला आर्टिस्ट, तो बहुत है, बहुत सारे मिलेंगे रेफरेंस से. बट दिक्कत ये है कि हाउ मच यू कैन रेप्लिकेट दैट, बिकॉज दैट थिंग इज कमिंग टू देम आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. उन्हें अच्छा वक्त दिया उसके लिए, उसके बाद वो आ जा रहा है डायरेक्टली फ्रॉम देयर हेड. सो फाइंड रेफरेंसेस, आई वुड से, विच इज इजी टू रेप्लिकेट. और ऐसे 10-20 कैरेक्टर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है. 5 कैरेक्टर्स अलग अलग एज और जेंडर के. रीजन ये है क्योंकि इस साल सीड ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसमें रेफरेंस ही नहीं था. And that took people by surprise, right? Yes. So usually what they ask is like they give you give you Gauri, they give you Rohan. Rohan is the name, right, of that kid, Gulel वाला बच्चा. तो वो तुमको रेफरेंस ऑलरेडी देता है, तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है बनाना, क्योंकि है कुछ तो है पेपर में. अब एक सीन क्रिएट करना है खुद से. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस. द थिंग इज, हम सब मूवीज देखते हैं, हम सब वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, एनिमे देखते हैं. You can just pause that video for a second and look at the composition. What is in the foreground, middle ground, and the background? How it is composed, and what are the things that are kept, and what it is telling you about the scene. Because this is what you have to do in the exam. Exam में तुमको background नहीं बनाना, लेकिन गौरी अगर बैठी है तो जमीन पे तो बैठेगी नहीं, कोई कारपेट होगा, है ना. और अगर वो फिशेस बेच रही है तो मक्खियां भिनभिनाएंगी उसके आसपास. मे बी वो उसके पास एक धूप बत्ती होगी जो उन मक्खियों को हटा रही है. ये सब तुमको स्केच में नहीं दिया. दिस इज व्हाट, ओके, लेफ्ट ऑन योर इमेजिनेशन. नाउ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, दिस इज प्रॉप. दीज आर द प्रॉप्स, ओके, दैट विल एनहांस योर स्टोरी. बट 20 मिनट में इतना कहाँ सोचोगे. तो वो 20 ही मिनट है, और एग्जाम में वो 20 मिनट बहुत जल्दी निकलता है. अगर कंटेक्स्ट ऑलरेडी पता हो तो कर सकते हैं, बट उसमें फिर करने में दिक्कत होगी. मतलब एट अ टाइम वो सब नहीं आता दिमाग में फिर. बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा. और जो आएगा दिमाग में एग्जाम में वो सबको आएगा, तुमको अकेले को नहीं आएगा. हाँ, सबको वही आएगा, है ना. और सेकंड में रहता है जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है अपना 5th वाला, उसमें छोटे छोटे इलस्ट्रेशन बनाने होते 3-4. तो वो इलस्ट्रेशन का मेरे दिमाग में कुछ ऐसा खास क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा. मैं जब भी बनाता हूँ वो जेनरिक सा और मीडियोकर बन जाता है वो. तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं. not your fault at all.
क्रिएटिविटी का एक अलग से ट्रेनिंग होता है, वो करते हैं लोग, तो आता है जो एडवर्टाइजिंग के लोग करते हैं, ठीक है, राउंड टेबल पे बैठते हैं और बोलते हैं कि आज हम कैसी जीभ लपलपाई बनाएंगे। सोचो, एंटरप्रेन्योर्स, बिग Yes. एंटरप्रेन्योर्स, है ना, बैठ के बोलेंगे ऐसा कैसा करें, समझ में नहीं आ रहा। शाहरुख खान बैठा है वहां पे, शाहरुख खान के साथ क्या करेंगे, शाहरुख खान भुवन बाम की Yes. चंपी कर रहा है। हाँ, So these people are insane. They are looking at you guys and you guys give them content कि हम जो फालतू हरकतें करते हैं ना, ये वो उठा के बनाते हैं, ये बड़े हरामखोर है। yes. है ना, इनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अतरंगी होती है, ठीक है। सो दीज पीपल आर ट्रेन, सो इनका काम देखना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत एडवर्टाइजिंग देखो, क्रिएटिविटी मिल जाएगी। और मेरे को और ये लगता है कि ओरिजिनलिटी उस क्रिएटिविटी में तभी आ सकती है इफ यू इंटरैक्ट विद पीपल अ लॉट। यूजुअली वी आर ट्राइंग टू आइसोलेट आवरसेल्व्स, आई डोंट नो व्हाई। वी आर डिजाइंड नॉट टू गेट आइसोलेटेड, नॉट टू बी अलोन, है ना। हम कम्युनिटी में रहने के लिए बने हैं, इसीलिए ह्यूमन काइंड इतनी आगे बढ़ी है। बट नाउ इफ यू सी, एवरीबडी हैज देयर बाउंड्रीज। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, I'm not going to be with that. This is not my thing. Yeah. Okay, just go out and absorb everything. Be a sponge. That's what I would say. When you absorb, you come to different stories. Those stories can be very stupid, है ना। उनका कोई लेना देना नहीं होगा, बट वो तुम अगर लेकर घूमोगे तो पता नहीं कहाँ काम आ जाए। I would want to tell you one thing, मतलब ये प्लीज, ये अगर डाल रहे हो यूट्यूब पे तो ध्यान से डालना। I was in Vijayawada last year, totally isolated because I couldn't understand the language in a village. There they don't speak English. तो वहां पे मेरे को दमसराज खेलना पड़ता था, ऐसा खाए कुछ चाहिए तो पूछने के लिए, केला दे दो, सेब दे दो, तो ये चाहिए, ऐसा करके बोलना पड़ता था, है ना। So there I while preparing for CEED, I used to play football with kids. Now those kids were literate, so they used to speak English, है ना। तो उनसे बात होती थी, तो वो मेरे से हिंदी सीख रहे थे, मैं उनसे तेलुगु सीख रहा था थोड़ा बहुत। सो ये देखो, इसमें कितना बेकार स्टोरी है ये, इसमें ये कुछ ज्यादा ही यूनिक नहीं है। बट एक बच्चा है वहां पे, तो आई जस्ट आस्क हिम कि व्हाट डू यू डू इन स्पेयर टाइम। ओह, आई हैव an account on Instagram. So I said, oh, you have an account on Instagram? You are just 10. So what do you do on Instagram? I chat to girls. Bhaiya, I chat to girls. So a lot of his friends, sir, he has a girlfriend. He has a girlfriend. I said, oh, whom do you chat? So he said, what did he say? He said that his sister, and I have a girlfriend. All of those kids. Okay. So this is a stupid story. Okay, this is a stupid story for me, but just imagine what I got from there. It's still with me. Right. You just listen to this. We say arm to mango, right? Mango is arm. It's a fruit, right? In English, it's mango. It's in Hindi, it's I don't know how many Telugu are here, but in Telugu, it's Mamdi Pandu Chettu. Mamdi Pandu Chettu. Mamdi Pandu Chettu. Oh, bhai. Chettu. Look at this name. So if you think about everything, yeah, Chettu means tree. Chettu means tree. Oh, Kolepara. See, the name is interesting, dude. So surname actually. यार, क्योंकि आगे वाला मेरे से प्रोनाउंस ही नहीं हुआ। स्थिता प्रज्ञा। वो जोड़ दो, स्थिता प्रज्ञा। So the thing is, the more you are involved with people around you, the more stories you get. क्योंकि वही हम उन्हीं के लिए डिजाइन्स बना रहे हैं। कोई भी डिजाइनर रहने दो, कोई फिल्म मेकर रहने दो, कोई वेब सीरीज बनाने वाला रहेगा, या कोई UI UX वाला डिजाइनर, करते क्या है ये लोग? लोगों को बुलाते, इंटरव्यू लेते, है ना। If you are aware, then you already know so many things. And they see, if you are taking an interview of a person, that person is very conscious. ये क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा बता रहा है। I don't know how honest that person will be, but if you just observe, and you'll get to know so many things, है ना। एक मैंने एक्चुअली इधर पे स्टिकी नोट चिपका रखा है, उसमें लिखा है मैंने, दुनिया को समझाना नहीं समझना चाहिए। Exactly. See, so good. क्या बात। और एक चीज और पूछना थी, जैसे मान लो क्रिएटिव आइडिया भी आ गया, यू ड्रॉ इट, बट यू फील लाइक इट्स वेरी फ्लैट, तो उसको थोड़ा पॉप आउट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक तो डब्बे खाली ना छोड़ के आना, अगर फ्लैट लग रहा है तो छोड़ दे, बना के आना। नंबर 1, द पॉइंट इज टू कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर। नहीं, बना तो दिया, मेरे को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट जैसे शीट बैक कर देना, नाउ यू हैव 5 and 10 minutes spare in the use, right? But I am looking at my icons and they are looking very flat. So what can I do to, like pop it out a little bit, so that will catch the eye of that particular. See, what I am trying to understand from your question is, you can use different shades, not colors, shades.
so that you can create Mhm. contrast. So contrast will remove that monotony. Yes. Okay. Okay. So if you Okay, use okay. contrast, it will remove. So if you see icons in CEED that they have given, ज्यादातर सर icons क्या होते हैं? एक straight line होती है, एक black patch होता है और एक white color का डब्बा होता है. So three things: white color, black patch, and straight lines. So why are these elements used? Because to create contrast, ताकि वो तुम जो बोल रहे हो ना flat ना लगे. That's it. तो उस वैसे ही तुम कर सकते हो. Okay. और सबसे important चीज इस बी के एग्जाम में I guess नहीं पक्का composition. Okay, if your design is flawed, if your drawing is bad, okay, just two things keep in mind: composition and make your paper neat and clean. क्योंकि सबसे पहले क्या है कि तुम्हारा इन्विजिलेटर तुम्हारे पेपर पे कितने देर तक रुकेगा वो मैटर करता है. Because there are so many people giving the exam, for how long that person is going to watch your paper and for how long he is going to analyze those designs. तो वो एनालिसिस, अगर प्रेजेंटेशन ही गंदा है तो तुम्हारा डिजाइन अगर अच्छा भी रहेगा तो फिर तुम्हारे ऊपर दया करके तुम्हें मार्क्स दे रहा होगा कि यार ठीक है डिजाइन तो अच्छा बना है पर दिखने में बेकार लग रहा है. तो वर्क ऑन एस्थेटिक्स बिकॉज इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मेक योर पेपर लुक डिलाइटफुल एंड इट विल स्टॉप द इन्विजिलेटर. ओके, सो मेक एंड दिस इज इन योर हैंड्स. इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ कागज गंदा नहीं करना है. अभी किसी ने पूछा था कैन आई यूज चारकोल इन पार्ट बी, है ना? Charcoal. So I said, yeah, use charcoal, spoil it, and also use a fixative. It might be exam you're fixing your paper in front of everyone. Do it. और कोई यूटेंसिल्स नहीं लगते, कोई बहुत महंगी चीजें नहीं लगती. A lot of people use pens. I did not. Okay, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, यूज करना है. सिर्फ यही है कि पेन में क्या है, कंट्रोल Z नहीं होता. पेंसिल में भी नहीं होता. पेंसिल भी अगर तुम इरेज करोगे तो गंदा दिखाएगा. और जहां तक कॉम्पोजिशन की बात है ना, ऑलवेज ट्राई टू लुक थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेम. आई एम ट्रेन्ड इनटू इट. मैं तो एनिमेशन डिजाइन ही कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग ही कर रहा हूँ, है ना? तो वही करना है हमें लाइफ में. तो आई डोंट नो अबाउट यू, राइट नाउ आई एम लुकिंग एट यू इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम एंड यू आल्सो आर लुकिंग एट मी इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम एंड ऑल ऑफ अस आर लुकिंग वेरी अगली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन. ओके, बीच में ही है अपन. ओके, सो और एक चीज है, अगर जहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा कैरेक्टर फेस कर रहा है, लेट्स से यू आर मेकिंग अ गन. ओके, सो दिस ऑब्वियसली दिस इज द फेस ऑफ द गन बिकॉज दिस इज पॉइंटिंग देयर. मुझे बताना नहीं पड़ता. सो मेक श्योर दैट यू हैव सम स्पेस हियर. Okay, it's a very staging. common You are talking about staging. You will what you will do, you will create the gun over here. Yeah. ये पूरा स्पेस बेकार हो गया. Staging and then सही you will करना write चाहिए. also there. You will write also there. That will make your answer look more ugly. Yep. Okay. और अगर तुमको ड्राइंग करने के लिए जगह दिया था, ड्रॉ करो. और ऑब्वियस चीजें लिखो ही मत. एक बंदे ने मेरे को भेजा था स्केच. आई एम सॉरी प्रंगना, आई ओनली शेयर्ड योर स्केच. ओके, एक बंदे ने भेजा था जिसमें उसने एक राउंड ऑब्जेक्ट बनाया था जो फ्लैट दिख रहा था, राउंड नहीं दिख रहा था, और उसने उस पर लिखा था राउंडिटी, राउंड सरफेस. तो यूजलेस चीज है ना वो. अच्छा, है ना? तुम बना लो ना उसको, राउंड दिखा दो, राउंड, है ना? और कोई वर्ल्ड क्लास ड्राइंग नहीं चाहिए रहता सीड में, कोई नहीं चाहिए रहता वर्ल्ड क्लास ड्राइंग. कंप्लीट कर देना, नीट एंड क्लीन रखना, और जो तुम्हारे दिमाग में, जो शेप्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, जैसे तुम विजुअलाइज कर रहे हो, ओके, वैसे सिर्फ वो कन्वे हो जाए किसी तरीके से, है ना? इन्विजिलेटर को समझ में, ओके दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. दैट्स इट. Okay. Thank you, yeah, Okay, thank you thanks. so much. Yes, Savita, what do you want to ask? Everybody else who wants to ask questions, raise your hand or put your name in the chat box. मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी क्या मतलब आपने क्या ऐसी गलती, या फिर आपके साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, कि कोई ऐसी चीज मतलब ट्रिक की हमें जो एग्जाम के टाइम पे नहीं करनी चाहिए, जो आपने की और जो आप हमें बताना चाहते हो कि आप वो गलती नहीं करना. मेरा यही क्वेश्चन है. सूरज ने कोई गलती की होती हो तो ऑल इन रैंक 1 नहीं होता वो. सूरज ने गलती नहीं की. विद ऑल हम्बलनेस आई वांट टू से मैंने कोई गलती नहीं की, बिकॉज़ जो गलती करनी थी एनआईटी में कर ली मैंने. शाबाश, है ना? आई गॉट एवरीथिंग फिगर्ड आउट इन द एग्जाम. मेरे को पता चल गया क्या करना है. एनआईटी में मेरी जनरल रैंकिंग 18 थी, उसके बावजूद आई मेस्ड अप इन वन क्वेश्चन सो बैडली, क्योंकि 5 ही मिनट में किया था मैंने वो सवाल.
तो मेरे को पता चल गया था ड्राइंग वॉइंग कितनी भी सुंदर हो, सिंह साहब आपकी एग्जाम में नहीं करना ये सब. So the videos also which you watch that I have posted on YouTube, okay, you see that all those are real-time videos. That's not the best product that I can create. But if I am on a round table with some entrepreneurs who are going to invest in my project, मेरे को उधर ही बताना पड़ेगा कि okay, this is what I want to sell, I want to create, है ना? उतना वक्त ही नहीं है हमारे पास. That's what this exam is about. In fact, ठीक है, मैं अभी compare नहीं कर सकता real life scenario और एक college exam से. Real life scenario is much brutal. Yeah. So मेरे ख्याल से अगर गलती मैं ढूंढूं तो एक गलती मेरे को लगती है, मेरे को MSQs अटेम्प्ट करने चाहिए थे. 2 नंबर कम आ जाते, अगर गलत हो जाता तो क्या दिक्कत होता है ना. और MSQs के बारे में मिथ होता है कि मेरे को बाद में पता चला ये कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर कम हो जाएंगे, पर जब पता चला तो मेरे को लगता है कि -2 नेगेटिव मार्किंग 0.2, राइट. 0.2 के हिसाब से 10 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो फिर भी 2 ही नंबर कट रहा है ना. और ये मेरे को ड्रीम टीम के एक बंदे ने बताया, ऋषभ नाम है भाई उसका, है ना. ही हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन पार्ट ए. That's true. ये मेरे सेकंड या थर्ड वीडियो में भी है, मैंने ये कोई वीडियो में भी बोला है कि क्या करोगे MSQ छोड़ के, सब अगर गलत आए तो 2 ही मार्क जाएंगे, और सब अटेम्प्ट करोगे 50% भी राइट आ गया तो 15 मार्क हो गए ना. या सो जस्ट फिगर आउट योर प्रॉब्लम्स कि तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम से बहुत अलग होंगे. मेरा तो गेटवे क्रैक हो जाता था, वही काफी था मेरे को. पार्टी क्रैक करना था मेरे को किसी तरीके से, है ना. The biggest problem was that, and in part B also, if you are good at drawing, so there is a little ego and arrogance that comes कि भाई अच्छा बनाना है ना. Even that becomes a hurdle, okay, and that eats up your time कि ये तो सुंदर बना देना, मेरे को निकल आया बस पेज से बाहर, है ना. So it's not only a problem with the people who are not very good at drawing, also a problem who are good at drawing. तो वो टाइम खा जाता है अपना. तो that sweet spot you need to figure out for yourself, I guess. Thank you. Yeah. Yes, साक्षी. और 130 लोग ने ज्वाइन किया आज. Very nice. Good. हेलो दानिश, हेलो सूरज. Hi. सूरज, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब किस हायरार्की में आपने पार्ट बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लाइक मतलब जैसे गिवन होते हैं सीक्वेंस क्वेश्चन का, वैसे ही आपने फॉलो किया था, या कोई स्पेसिफिक था कि नहीं मुझे फर्स्ट क्रिएटिविटी अटेम्प्ट करना है या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अटेम्प्ट करना है? Hierarchy I think matters in part A. It Okay. very much matters in part A. Part A में बोलने के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने निकाला है किसी तरीके से मेहनत करके पार्ट ए, है ना. तो पार्ट बी में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन तो 20 ही नंबर के हैं, और बिकॉज आई हैड अ प्लान, आई ऑलरेडी हैड अ प्लान, आई जस्ट वांटेड टू एग्जीक्यूट देयर. सो द प्लान वाज दैट आई हैव माय क्रिएटिविटी आंसर्स रेडी. तो कितने सवाल पूछते वो, 10 पूछते, 10 डब्बे दे देते, आई गेस, है ना. तो आई हैड 10 फिगर्ड आउट, एंड यू विल फाइंड दोस on in the drive link that I have provided. Okay, don't copy it because boring हो गया वो, भी कुछ नया सोचो. तो I had that figured out. मेरे को सिर्फ ये फिगर आउट करना था कि जो पैटर्न दिया है उसके साथ मैं अपने विजुअल कैसे बना लूं, है ना. That's all I had to figure out. तो मैं कूद गया उस पे पहले, and you won't believe वो शायद 10 मिनट में खत्म हो गया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 डब्बे दिए थे इस बार. यूजुअली ज्यादा देते, बट उस 5 डब्बों में इन्होंने पैटर्न रोटेट कर दिया था. So every pattern was different. That I remember. Okay. Okay. So that I attempted first. बच गया 4, and then you have to hop on different things. जैसे sketching question मैंने एक बार attempt कर लिया पूरा. Last में मैंने evaluation criteria अच्छे से पढ़ा था. They were demanding shading. मैंने shade नहीं किया. So of the day I had to shade it. जब सब खत्म हो गया तो शायद पता चला वो shading भी करनी है. Then I shaded every drawing. अब तो नहीं छोड़ना ना कुछ. I shaded every drawing. Okay. अब वो वाला सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाला शेड नहीं किया था, क्योंकि उसके लिए वक्त बहुत कम बच गया था, और ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में वक्त बहुत कम बचेगा. दैट इज व्हाई व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ऑलवेज अटेम्प्ट इन 15 मिनट्स. दैट्स व्हाट आई वुड से. 15 मिनट लगा, डोंट टेक मच टाइम, बिकॉज़ एनआईटी देने के बाद तो समझ आना चाहिए तुम्हें. राइट. एंड ऑल्सो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने देखा कि आपकी अप्रोच में मतलब जितनी भी स्पेस थी प्रोवाइडेड वो काफी अच्छे से यूटिलाइज की थी. अब लाइक अब मैं इतना फास्ट ड्रॉ नहीं कर सकती, लाइक इफ सपोज कोई सिनेरियो है, मतलब मैं इतना स्पेस नहीं यूज करूंगा, कुछ नेगेटिव स्पेस बच जाए तब.
मैंने भी फास्ट नहीं ड्रॉ किया, मैंने सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया जिससे तुम्हें लग रहा है कि सब भरा हुआ है. That's magic. Okay, see, what is the thing? When you look into a frame through a camera, through a viewport, what do you see? You see a foreground, middle ground and a background. Okay. All you need to do is hard work in the foreground and do little things in the middle ground and background. ठीक है? Okay. तुम पेंटिंग्स देखो, मतलब मैं नहीं बोल रहा रेनेसांस की पेंटिंग्स देखो, वो मैड आर्टिस्ट थे, वो पीछे के बहुत डिटेल में काम कर लेते थे. बट इफ यू लुक एट द पेंटिंग्स, कंटेम्परेरी पेंटिंग्स, यू वुड फाइंड ये कितना आसानी से वो कर रहा है. देखिए देखो, कोई भी चीज जो दिखती मुश्किल है और आसानी से कर दी जाती है ना, वो कला है, वो आर्ट है ना. दैट इज देयर आर्टिस्ट्री. तो वो फिगर आउट कर लिया उसमें. एंड द वे टू ड्रॉ फास्ट is not to draw everything and draw haste. The people who draw fast is actually they draw less. You draw less, but very important things. You don't draw everything out there. Okay. So why am I telling you to put the detail in foreground? Because foreground तो सबसे आगे वही दिखेगा. Okay. Okay. In fact, ये भी मत करो. The details should be on the focal point. अगर मेरा जो interaction हो रहा है, मेरे characters के बीच में जो interaction हो रहा है, that I have to demonstrate. So that will be in utmost detail. उसमें मैं आराम से पूरा काम करूंगा. Okay. In foreground, I'll put a little detail. और इतना भरने के बाद बहुत कम space बचता है. Okay. And then you feel like अरे यार इसने तो पूरा ही भर रखा है. तुम उन drawings को देखोगे ना, तो पीछे के जो characters हैं, they are just silhouettes. Okay. And still you didn't notice it. Okay. And those drawings are also not very good drawings. In the exam, my drawings were much better because when I'm recording it, I'm very new to this. Okay, I'm not tech savvy at all. So I already have to keep in mind कि record हो रहा है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं. So all the things, बहुत सारी चीजें चल रही होती है दिमाग में, so पूरा focus नहीं होता उस पर. तो जो output तुम्हारे पास है मेरे आंसर शीट्स का, वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास नहीं है, बहुत सही नहीं है जो डिलीवर हो रहा था. Okay, but still I've tried. है ना, hopefully improve होगा ये लाइफ में. Okay. Yeah. So what do you get from this? Just work on the important area, okay, and then foreground, and then do something in the background so that it doesn't feel empty. And also practice your part B in frames. अभी जो drawing space पे जो sketches आ रहे हैं, randomly लोग sketch कर दिया, photo लिया और भेज दिया. Don't do that. You are looking me through a frame, right? तो जब भी तुम drawing कर रहे हो या practice कर रहे हो, so make sure you will get an answer sheet, right, which is rectangular in shape. Yes, right. Okay. Creativity question के लिए भी boxes आएंगे. So try to look at things in boxes, in frames. That will improve your composition. और aesthetics वहीं से आते हैं. एक अच्छा composition अपील करता है. Okay. Yeah. Yeah. That's it. Thank you. Yes, thank you so much, Sakshi. Yes, Ayushi, 1 second. Before I come to you, Rahul has asked the question, if we are solving all the questions parallelly for part B, is that a good move? What? It's in the chat box. If we are solving all the questions parallelly for part B, is that a good move? Yeah, I think that's how, I mean, that is the natural way to do. That's the natural way to do because ideas तुरंत नहीं आएंगे एक ही सवाल के लिए, है ना. Maybe you are not prepared for the creativity question. एक box भर दिया. You are not going to waste your time just thinking out that क्या बनाओ, है ना. Hop on to the next question. Maybe something will click. Just the challenge is that don't leave the question paper. मेरे को तो पक्का पता है कि मेरे को ज्यादा नंबर इसीलिए मिले क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लास्ट क्वेश्चन छोड़े ही नहीं, किया ही नहीं है ना. तो तुम करोगे ही नहीं तो फिर क्या ही करोगे, फिर खाली पेज थोड़ी कुछ दे देगा तुम, है ना. बट डोंट डू these things consciously. मतलब प्लान करके नहीं करता कोई ये सब कि हम तो मतलब हॉप ऑन करेंगे, दिस इज द टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस नाउ, आई डू दैट. ऐसा नहीं करता. वो तो each one its own होता है. Someone just might feel that नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व, उसको पूरा खत्म करके ही नेक्स्ट करते हैं. Yeah. So whatever you feel at that time, just do it. Just don't leave the question paper, है ना. Yeah. Yes, Ayushi. Yeah, hello. Hi. Hello. Yeah, I have a doubt regarding product sketching. Like, I find difficulties in product sketching. One question. Yeah. I Yeah, saw actually, Suraj's face reaction. I wanted to know, is it compulsory to draw in 3-point perspective or 2-point? Like, can I draw in isometric view or like using parallel lines or something? Will it communicate? That is the question. See, there is no rule in CEED.
There is no rule as far as the evaluation criteria. There is no. It is not written that you have to draw like this or that. Okay. The best angle to reveal information is front 3/4. हाँ Okay. 3/4. Front 3/4, not back 3/4. अच्छा ठीक है 3/4 also has to go. This is back. हाँ okay I get Okay. it. हाँ This is the proper angle where you can reveal a lot of information. Wherein you can see my side pose also, something of the back, because back is not interesting, and then a lot of the front. Okay, and it is applicable to everything. Even if you see a product sketches, because this is how I prepared. I saw a lot of product sketches on Pinterest. Don't go on the drawing because those people have taken a lot of efforts into it. Drawing के लिए तो वैसे ही बनेगा जैसे 15-20 मिनट में बनता है ना? But you can always copy the composition. So what I did is एक product बहुत सही होगा in a particular angle which will reveal a lot of information. Okay, and one drawing you can make isometric view so that you can label your important aspects. है ना? मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे ड्राइंग को लेबल करके खराब मत करो, अच्छा ड्राइंग दिखने दो उससे बाहर. मतलब सेम प्रोडक्ट के we can draw 2 views in the question. I think you should draw 2 views at least because you have that much time. एक व्यू बना दोगे तो पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा. मेरे को 3 बनाने थे. I had composed कि एक यहाँ बनाऊंगा, एक छोटा यहाँ बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, टाइम नहीं मिला. एक छोटा सा रहेगा, है ना? So 2 बनाने, दो ही बन पाए अच्छे से, है ना? अच्छा तो लेबलिंग के लिए थोड़ा छोटा वाला एंड देन फॉर द मेन वन 3/4. या मीन सब बहुत मतलब ये मैंने इसलिए किया था कि कॉम्पोजिशन अच्छा लगे. देखो मेरा प्रायोरिटी अच्छा है, चीजें सुंदर दिखनी चाहिए. ठीक है. When somebody sees my work, doesn't matter 10-15 minutes, that should be appealing, that should be delightful. तो वो रुक के देखना चाहिए थोड़ी देर की क्या बनाया है. Okay, ऐसा है. So the whole training that I have is to stop you and just to look at my work and then go. Okay, look at everything. What my intention is to tell you, just consider that information and then you go. That's what I want. So it is not a rule that you should do like this or like that. This is what I did because this works. This traditionally works. And one more thing, very interesting thing. मेरे को ना ज़ाहा हदीद के बारे में नहीं पता था और वो आर्किटेक्चर क्या है वो भी नहीं पता था क्योंकि क्या मालूम है उसका 2 एंगल दिया था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था. So see, I am very good at spatial anatomy. मैं चीजों को घुमाने में घुसता दूं. मैं अगर सामने कोई चीज देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है इसका फॉर्म कैसा है. बट वो पिक्चर देख के नहीं पता चला क्योंकि वो शेप ही इतना अतरंगी था. सो द शॉर्टकट दैट आई यूज्ड, आई जस्ट कॉपीड दैट. वो एंगल ही कॉपी कर लिया मैंने. सो द स्केच दैट यू सी इन माय आंसर, इट्स नथिंग बट द क्वेश्चन पेपर. ओके, सो आई जस्ट टुक दैट, आई ड्रू दैट. ओके, एंड आई फेल्ट द शेप्स. देखो उसके ऊपर एक कॉन्टूर लाइंस है ना जो उसके फॉर्म डिफाइन कर दिया. I literally made those. I made those. And I just gave a handle and it became an iron. Like your sketch, it looked very different from the actual iron that we use in our day-to-day lives. So ऐसा कर सकते हैं कि वो मतलब थोड़ा अलग लगे structure wise. देखो चीजें ना अलग दिखने के लिए मत बनाना कभी भी, है ना? चीजें जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जरूरी. चीजें अलग दिखने के लिए, सुंदर दिखना, अलग मतलब सुंदर तो दिखना ही चाहिए, सबसे अलग दिखना, यूनिक दिखना, दैट शुडंट बी द अप्रोच, है ना? ओके, मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आई कैन ऐड द डिटेल्स. People also experiment with functionality. I think basic functionality जो है वो वही रहनी चाहिए, जो प्रोडक्ट का काम है वो करना चाहिए उसे, है ना? जैसे वो पुलेपारा, आई एम सो सॉरी, that's how you know you. Okay, so the fan that he made, it was not functional. And there are a lot of sketches like that. ऐसा नहीं है कि उसका ही है, सिर्फ बहुत सारे sketches हैं, बस उसका मिल गया, मेरे को पता नहीं था उसको, है ना? तो वो घूमना चाहिए ना एटलीस्ट फैन. अभी आयन है, तुम उसको कुछ अजीब तरीके से बना दोगे, उसका हैंडल ही अजीब है, पकड़ा नहीं जा रहा, है ना? या वो खड़ा नहीं हो रहा जगह पे जैसे यूजुअली आयन ट्रेडिशनली रखते हैं, तो फिर उसका यूज नहीं है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग द आइकन्स क्वेश्चन, आपने बोला कि कंट्रास्ट के साथ यू कैन प्ले विद इट, तो आइकन्स में भी आई कैन यूज 3 डिफरेंट टोन्स लाइक मीडियम, लोअर, हाई टोन, और मतलब यूज लाइक ओनली ब्लैक एंड व्हाइट. See, now the CEED is asking 2 type of questions. What I have realized after giving 2022 paper, एक तो सरप्राइज करता है and be ready for surprises. Last question paper तक उसने आइकन्स दिए थे तुम्हें, रेफरेंसेस देता है तुमको. इस बार कुछ नहीं दिया था, तो आलस आ गया था शायद प्रोफेसर को इस बार, तो इस बार नहीं दिया था कुछ भी. So when nothing is given, you can go wild. That is a pro.
Okay, but when nothing is given, you don't know anything. That is also that's also a con. Okay, so specifically tell me what kind of question are you asking कि reference दिया है तो क्या करना है या reference नहीं दिया तो क्या करना है, क्योंकि दोनों का approach अलग है. मतलब दोनों में ही अगर रेफरेंस दिया है, जैसे उसमें एक इमेज में दिया था फ्लावर दे ड्रॉन, दे हैव गिवन अस फ्लावर और उसका बनाना था आइकन, तो उसमें कैन आई प्ले विद कंट्रास्ट टोन्स अ लिटिल बिट? Exactly, that's where you can't play because you already have a family. Now you have a limited space. Okay, limited space हो गया, then you can't go wild now. Yes. Okay, so you have what basic shapes that are repeated in the reference. Okay, wait, yeah. So just analyze those elements. For example, the recent question that I saw was of the masks, right? Different masks of animals in which things were designed. So the design was what? Every icon question, because CEED is giving you the question paper which is black and white. So every icon question will have a solid black color, solid white color, and lines. These three things they'll have. Okay. Apart from these things, what you can identify is whether there is diversity in shapes. If there are 4 icons, whether there is a rectangle, a triangle, and a circle. Because or there is no diversity, then your icon should also not have diversity. Right? And what are the elements that are repeating into it? For example, in the particular question that I am talking about, there the mustache is repeating. If you have solved the question paper, you would remember that. I don't know whether you know that or not. In this mask icon, there is a mustache to every animal. So your icon that you come up with should also have these elements. Okay. So the approach is you have to analyze everything when reference is given. Okay. When reference is not given, then you are free to flex. Okay. But again, the thing is there should be contrast. What you are trying to convey, okay, should be conveyed properly. Okay. And did you use pencil for you doing the icons one or pen? Yes, everything I use pencil. I even wrote my answers with pencil. Acha, okay. Like sometimes they mention that use only black color. So in that case, should we do like black pencil sketch or black pen or something? When they are saying use only black color, what I perceive is don't use colors. Acha. Okay, don't give colors. Use. Okay, they are not telling you to use exactly black color, and that's what I think. Yeah. Okay, thank you so much. Yeah. Thank you so much, Ayushi. Yes, Shivangi. Hi. Yes, my question is regarding the form sensitivity question. Like you said ki last time what you had done, you replicated the structure and added a handle. मतलब same इसमें बना के, since they did not like, and इसके पहले जो questions आते थे, they would give like a product and they would ask you to make another product identical to it. Yeah. But last year ka question was very different. So my approach usually to these questions is from that product design perspective when I approach a form sensitive question. So is that a right approach? Or because what I do is कि I'll take a structure and then I'll break it down. उसमें से deconstruct करके जो elements होंगे उसको I will use and make a structure, make a product. So is that the dissection. right? Yeah. So is that the right approach or? See, since CEED will surprise you, so you have to come up with maybe real-time approaches. Because like you said, the question is totally different in 2022 question paper. And this time it can ask you other things, right? I don't know what it will ask. अभी तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया कि ये सवाल आएंगे, है ना? CEED is exactly like that. तो I think तुम अपना basics ठीक रखो. If you can draw 3D structures, 3D volumes, and you can shade it properly, okay, I think you are good to go. If you are able to draw 3D shapes on a 2D surface, okay, and dissect it like you said and reconstruct it, then I think you can do it, okay, in the exam also. Doesn't matter what the question will come. So I have attempted a question like that. Can I share my screen and show it to you and get your I don't mind. That's Suraj mind. I don't mind at all. Okay, good. Okay, 1 second. That's good. I have no problem at all. एक हफ्ता बाकी है, जितना हेल्प ले सकता है ले लो, जो भी मिला है जहाँ से भी मिला है ले लो. Yep.
मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, मैं भी पूछूंगा. Yeah. अभी नहीं, अभी नहीं, once this सबका एक बार हो जाए, सबको पहले पूछते रहते हैं, because मेरे को भी एक बहुत it's not a technical question. I'm not going to ask a paper based question. मैं ज़्यादा Yeah. I also don't promise to give you a right answer. Wait, I am more towards stress, life, managing yourself and all that stuff. So Yeah. yes, Shivangi. Yes. It's continue. visible. Yeah. Yeah. So this was the structure Oh God. that Okay. and Please go its response was sorry. This was the response that I did. Okay. What is this? Is this a chair? Yes. Okay. Yeah. Now this is a tricky question, because you see there is no uniformity in the spiral, and the chair that you created is uniform. Okay. Okay. So visually, because see, I'm not a pro in product design. I just messed up a video. Yeah. What I feel in this is it is not visually same. It won't be from the same family. Reasons, two reasons. Because the strips that you have used are very thin. Thin. Okay. And the strips there, okay, they are not strips, they are stairs. Yes. So the thickness on the bottom and the thickness of the height is same. That is an element of the reference. And other thing is your design is very uniform. The design is very good. Okay. It's really nice. Okay. But if this is the reference, this design, I think won't resonate much with the reference. Just think about how you can make it a little bit non-uniform. थोड़ा सा एक रिब बाहर कर दिया या कम रिब्स यूज किए, है ना? Okay. That's what I think. और दूसरी चीज मेरे को मतलब फंक्शनैलिटी पे बोलना चाहिए, उसके सपोर्ट वो दोनों साइड से सपोर्टेड है क्या, या बीच में वो तुमने जो लिखा है पुश्ड वुडन लेग्स? This leg is coming on both the sides. So this is the seat. It's inclined, and then it has a support that goes like this. Yes. Yes. So it is also supported from the back, right? So this is what is supposed to take back ka support. Support this whole part. If I sit on this, I'll fall. Yes, that's what I think. Yeah. Because the support is totally on the front. And if you lean back, I think you'll roll back. Center of gravity आपका काफी आगे हो गया है. Yeah. So what I would do in such a question is I would create a simple chair first. Simple chair that I have at home. And I would try to incorporate the look and feel of this reference into it. Because see, I'm not a product designer. So I'm not going to create a new product. Okay. I would use a product which is already in the market, which is used by the consumer. Because see, if a product is flawed, that won't be repurchased again. तो वो गायब हो जाएगा अपने आप मार्केट से. बट इट इज ऑलरेडी इन द मार्केट, व्हिच मींस उसका फंक्शनैलिटी में कोई इशू है नहीं. तो वहां पे मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं वो फील्ड से. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ रेफरेंस फ्रॉम रियल लाइफ. आई विल यूज अ नॉर्मल चेयर, बट एंड आई विल थिंक कि मैं ये कैसे इनकॉर्पोरेट करूं उसमें, क्योंकि इसमें स्पाइरल्स है, मेरे चेयर में स्पाइरल कैसे आएंगे. ओके. एंड सेकंड थिंग वो स्पाइरल का थिकनेस समझ में आना चाहिए मेरे को, और नॉन यूनिफॉर्मिटी. आई थिंक दीज आर द एलिमेंट्स दैट आई विल राइट डाउन फर्स्ट कि ये एलिमेंट्स है जो मेरे डिजाइन में आने चाहिए. ओके. बट यू हैव कम अप विद अ रियली गुड डिजाइन. ओके. सिर्फ वो गिर जाए तो फंक्शनल नहीं होगा, पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है गिर जाएगा. ओके. हाँ, तो उसका शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ आई शुड प्ले एंड थोड़ा और या फिर थिंक सिंपल. तुमने तो मतलब एस्थेटिकली भी प्लीजिंग होना चाहिए, फंक्शनल भी होना चाहिए, रेफरेंस में भी होना चाहिए. यू हैव एक्चुअली इनवाइटेड अ लॉट ऑफ डेविल्स in 20 minutes. So always in every question, try to make your life easy. All right. Yeah. Okay. Yeah, you were asking something. No. This was the question I had. Okay, I really hoped it helped. Yes, it did. Yeah. And genre नहीं है भाई, अपना ही है. हाँ. तो स्टार्टिंग में समझ जैसे क्वेश्चन चालू हुआ, उफ, प्रोडक्ट डिजाइन नहीं. प्रोडक्ट डिजाइन प्रो. समझ गया. Yes, Pallav. Please. I have attempted a mock question today, and it wasn't really related to the
form sensitivity question which we had the last 2 years. Can I share it? Yeah, sure. Go ahead, bhai. Form sensitivity. So, भाई WhatsApp मत खोल देना. Oof. sorry. Is this visible? बहुत छोटा दिख रहा है बट ठीक है. बहुत अच्छा दिखा है. Full You can screen pin पे तो it. नहीं दिख रहा. You can pin it if you want. I mean, Yes, send it in the group. I'll see it Oh. on Telegram. hey, keep it here only because the meeting is being recorded. The group के बारे में जो YouTube पे देखा समझेगा नहीं. Can you pin this? Oh, Suraj? You हाँ. can pin it on your screen. Yeah. क्या ये? Okay. Info bot. So I'll share this in the group first of all. Yeah. Guys, one more thing. If it is a product design question and you are incorporating a human figure, make sure it is very simple. उसको है ना बहुत complicated ना बनाना. Yes, it's coming in the group. Yes, just a minute. Oh no. That's why I tell you guys जब हमारा session होता है, please keep your sketches ready on your laptop because Oh. everything is recorded and it goes on YouTube, so it's important. I just sent it. Okay. Just a minute. I have to log in on Telegram. I'll WhatsApp it to you, Suraj. Yeah. Do it, please. I'll save your time. I can share a screen and show you here. I think that will be quicker. Yeah, keep the screen on. Yeah. That way it will be recorded, right? Yeah. Thank you, Mayank. Yeah. Nice. Good work. यही चला था कल आपका लाइफ पे. सब चीज स्क्रीन शेयर करने का. Okay, and interaction. Yeah. So this question isn't really the one we had for the past 2 years for form sensitivity. And about this, see, this is so just a basic question. Is this a good answer? What is the question? So we had 4 forms, which were I guess a disc, a cube, a cone, and a sphere, and we have to make a sculpture. Whoa. Okay. Nice. A sculpture in an IT firm besides their reception desk. Oof. So it is an installation, right? Yeah. Yes. And the It question will just be there. So this question specifically stated it has to be interesting and a balancing sculpture, which I think I missed that point. I don't think it is pretty balancing and it isn't very interesting at all. I mean, if it is a static sculpture, there will be some ways to make this. But this is definitely not interesting because all you did is just took the shape and put it upside down. On one top of the other. Exactly. Yeah. So do you want some reference for something like this? Yes, definitely. So okay. How just can Google Henry Moore. I mean, this is not the pronunciation. I'm just saying so that you get the spelling. Google Henry Moore. It's Moore. And just see how he makes sculpture from basic shapes. Yeah. See somebody actually, Henry Moore. Okay. Okay, so you'll come up with different arrangements of different shapes. Okay. Okay, and how he uses negative space also with the things that he creates. Yes. Yeah. And one more question I had is, can we use drawing instruments in the icon question? Drawing instruments as in protractors to make circles? Nobody will stop you. This is what I saw. Okay, Yeah. I just gave the exam once, so most of the people had so many tools, and nobody was bothering at all to them. But I mean, do it on your own risk, I would say. Okay. But nobody was bothering them, so they were using. So yeah, you can, I Not guess. from the invigilation point of view, but from the examiner's point of view. Is it advised? See, you will be judged on the basis of evaluation criteria. If they are saying that scales should not be used in the evaluation criteria, then you shouldn't use it.
Okay. So if it Because isn't if you make a mentioned, line with a scale and with your hands, then there is a difference. yeah, Okay. So if it is not mentioned in the evaluation criteria, nobody is going to say anything, I guess. okay, Okay. But if somebody is judging you on line quality, then definitely that person wants you to draw freehand. That's what I okay, perceive from the okay, evaluation criteria. okay. So usually in the Which you logo made or use of. icon, in that icon question, they usually judge by the aesthetics of 2D form. No, the first thing is the aesthetics that will get their eye. They will judge you on the basis of evaluation criteria. Yeah. Okay, Yes. okay, Okay. They're not going to judge you how beautiful you draw. okay, The beauty will only grab their attention. okay. So Yeah. using these tools saves a lot of time. Yeah, it does. Maybe. I don't know. I mean, I'm Okay, used to draw freehand, so I'm not aware of it a lot. okay, okay. But if it Getting it. saves you a lot of time, I would say don't be dependent on tools, because Okay. who knows what this question paper will do this year. Yes, yes, Okay, they will come up with something something different way to trouble you. They will. They will. sure. Yeah. Okay, so if you are ready for surprises, you won't be surprised in the exam. Okay, yes, Okay, because just be ready for everything and just get your basics right. yes. Basics right in the sense 3D forms should be there. You should be able to draw 3D Okay, 3D volumes. Okay, and you okay, should be good with composition, lines. Okay, these are the things that you can learn quickly. Drawing is something which will come eventually, but these things will you can just copy it from internet. I'm not saying you to become a movie director and compose your shot the way it is asked in CEED. For example, Gauri yes, question. You don't have to compose it every time. Just see how fisherwoman sits around you. Okay, grab a picture or see a story or a movie, take a screenshot of that movie. Okay, and compose it like it. Just copy the composition, I would say. okay. Okay, and in all the questions. Sure. Yeah, Thank you. yeah. Thank you so much, Pallab. Yes, Mehal, please. Hi, Suraj. Hello, So, Mel. hi. So my question is कि जो ये प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन होता है और जैसे भी आपने बताया कि गुड मूव इज कि यू नो एक तुम्हारा जो फाइनल ड्राइंग है वो बनाओ और उसमें लेबल मत करो. अब दिक्कत ये कि जो ये जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था आर्किटेक्चर से इंस्पायर के प्रोडक्ट बनाओ या फिर उसके पहले भी जो आते थे व्हाट आई डू इज कि मैं भी ऐसे 3/4 पर्सपेक्टिव में बनाती हूँ और आई हैव दिस हैबिट ऑफ लेबलिंग. Like yesterday, I attempted a question जिसमें लोटस टेम्पल दिया था and you had to make a soap dispenser out of it. तो अब उसका जो नोजल है वो मैंने पेटल की शेप का बनाया तो मैंने लिखा कि इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पेटल. फिर उसके जो ग्लास पेन वो तो उसका कुछ बनाया तो आई राइट दोज थिंग्स और वो मैं छोटे वाले स्केचेस भी बनाती हूँ टॉप और साइड वाले. बट उसमें ना जो थोड़ी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है जैसे इन्फोग्राफिक लेबल कहाँ लगेगा वो उसमें दिखा देती हूँ क्योंकि वो स्केच इसीलिए कि वो दो पर्सपेक्टिव के साइड में जो नहीं दिखा वो छोटे वाले में दिख जाए. तो अब Exactly. So you have a reason of 2 drawings. That's good. हाँ तो अभी वो लेबलिंग शुड आई रियली लाइक avoid See, totally? whatever you are drawing, even right now you said that you are drawing 2 different angles after you draw a front 3/4. So ask yourself a question that whether whatever I want to convey is clear from these drawings or not. For example, you are writing that it is inspired by the lotus element. So do you really have to write that? For example, I just mentioned someone who actually made a curved surface which was not looking curved and he wrote that it is a curved surface. Is it? I mean, this is a common sense that if you are really drawing something which looks like a lotus, then it should look like a lotus. Okay, you shouldn't be you should not have to tell the onlooker that okay, this is inspired by this. Question everybody knows. The invigilator who checks the question knows. So only mention the very important things. For example, the nozzle that you said, the nozzle can be anywhere in your product, right? So because it's a new design, you are designing something from which is inspired by something. So the nozzle you can place anywhere, the buttons you can place anywhere. So you have to mention that. So you need to ask yourself whether the design that you are creating
is convincing and comprehensible enough? Is it understood? And try to work very less in the exam because time is very less. Okay. So number of drawings are not going to fetch you marks. The quality of drawings are going to fetch you marks, and the amount of information that you deliver in that much amount of drawings that you provide. Okay, that is important. So it is not a hard and fast rule that you have to draw this many angles or this particular angle. I do that because that was looking good. Okay, and then it was like you saw that sketch, right? You don't have to read the labels. You know it is the Zaha Hadid architecture and it is an iron. Okay, you see all the elements of the iron, the plate, the handle, the wire, the knob, everything is there. So you don't have to actually read the labels, and that is what is going to win you. मेहनत ही नहीं करानी अगले से, जितना comprehensible तुम्हारा design है उतना बेहतर. Because this is not the final design, this is just the pitch. Think it in terms of pitch. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yes, thank you so much, Meghal. Once again, Samishta, if I come to you, I just want to read what's in the chat box. Suraj, what were the tools that you have used in the paper? I have a YouTube video for that. Okay, so that go and watch the YouTube video. Array pencils and clay eraser, nothing more than that. And yeah, before that there was a question. Suraj, how do you keep calm when CEED surprises you? Because time and during the paper. You really want me to answer this? Because life is too much brutal than CEED, dude. Most of the time. And also, okay. So keep calm. Okay, kaise kiya tha? Because I had a plan, number one. I'll try to give a logical answer, not a philosophical one. If you have a plan, basically why you get stressed out? Because you don't know what to do. That's a situation. In a situation when you don't know what to do, you mess up. Yeah. So if you know what to do, for example, if you get anxiety, then ask yourself why it is happening. Have you not prepared enough? If you have not prepared enough, it will come because now you don't know what to do. Yeah. But if you have a plan, you know what to do, how to, you don't have to perform in the exam, you have to execute your plan. Okay, you know this is the number of questions, this is part A, this is part B, this is how I'm going to approach part A, this is how I'm going to approach part B, these are my weaknesses and these are my strengths. So if you do your SWOT analysis, you can control your anxiety, and anxiety is good, a little amount of anxiety, Jeetu bhaiya bole the na. So it is a little amount of anxiety keeps you on your toes. So surprise, just be ready for the surprises. And one more thing, very interesting thing, how you can keep calm. देखो क्या होता है मालूम है, डर तब लगता है जब तुम अकेले रहते हो, जब सबकी फटी आवाज मेरे साइड में जो बैठे हैं वो भी पैर हिला रहे हैं ऐसे, शिट क्या होगा कैसे होगा, मेरे बाजू वाली लड़की मास्क पहन के एग्जाम दे रही है, बताओ. है ना? तो if you are everybody is in the same boat. Okay, so that will cure the anxiety, I guess. और वैसे भी अगर साल भर किया तो कुछ नहीं होगा. तुम्हें काम कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा एंजाइटी भी नहीं आएगा बीच में, तुम कुछ तो करके आओगे एग्जाम में. I know one of my friend who literally got to know about CEED in January. She's here with me in animation design batch. She got to know about CEED in January. But the question is, how did she crack it then? She's in IDC, right? She was, I guess, AIR 101, but she got in. So the thing is, she was a topper in her batch in architecture. So she was drawing since very long. Okay, so the preparation is not of 6 months or 7 months. Okay, the preparation, everybody who is here is actually doing it from a very far away time. So this mesmerizes me. Nice. Okay, Sakshi is asking Suraj, for the last week, what should be the practice approach for part A? For last 1 week. The practice approach for part A for the last week is just to practice your plan, which you have already decided in November end. So now this is not the time to change your plans, because this is the time when you should have turned all the stones. सारे पत्थर ऐसे उठा के देख लेने चाहिए तब क्या हुआ, because NIT is also over, right? Yeah. So that exam is also done. So you should know that, okay, here I suck, here I don't.
दिस इज माय प्रोज एंड कॉन्स. सो अब तक प्लान यही है कि लास्ट वीक का प्लान यही है कि अपने प्लान पे वर्क करो जो डिसाइड कर लिया तुमने. Okay, so you want to know my part A plan because I sucked at part A. हाँ बता. NAT, MSQs and MCQs, basic यही तीन ही चीजें आ रही हैं. So NAT will take a lot of my time, even though I know all the concepts, because I don't know from where they are going to ask. Okay, no negative marking, which is a pro. So if you approach MCQ first, what happens? See mentally what happens. स्टार्टिंग में फ्रेश माइंड से एमसीक्यू सॉल्व कर लिया तुमने, 23 सवाल होते हैं उसमें. टोटल सीड में 43 या 45 क्वेश्चंस होते हैं. सो बाय द टाइम यू सॉल्व योर एमसीक्यूज with the elimination method that you have, because that is the only method you have. Okay, if you solve the MCQs like that, आधे घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा. Okay, if you have practiced enough, and half an hour after that there will be a confidence inside you that आधा पेपर तो हो गया, आधा पेपर हो गया, अब दो छोटे टुकड़े बचे हैं, बड़ा चंक हो गया. Okay, so that confidence in front of that reverse clock helps you a lot. उसके बाद MSQ वैसे ही, फिर अगर वक्त बचा तो NAT. This was mine. Now if you are an engineer, okay, 4 साल से तुमने गणित पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, so might be NAT तो तुम्हारे से निकल जाना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, है ना. That is a major treasure. 3 नंबर मिलते हैं एक सवाल के. So if you get all the questions right, let's be very ambitious. या 5 सवाल थोड़ा नीचे आता है तो 5 3 से 15. कट ऑफ कितना था इस बार का? 24. लास्ट ईयर का कट ऑफ 30 आई गेस. 27, yeah. 27. तो कट ऑफ भी देखो तो इतना नहीं है. नहीं 27 था, सही है. 36 2019 का था आई गेस. So I aimed 36 because that was the highest cut off, है ना. बट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त मैं सोचता था कि 50 आ जाए तो यार तुम जीनियस. 50-60 आने चाहिए तुम्हारे, है ना, because you will be in the safe zone. And you know what, when I reviewed the question paper, मैंने silly mistakes किए उसमें. पार्ट ए में मेरे 45 बन रहे थे भाई, है ना. पर वो जो एंजाइटी जो तुम बोल रहे हो ना, वो मेरे को भी थी, जिसकी वजह से वो नंबर चलेगा. सो इट इज बाइटिंग एवरीबडी. सिर्फ कुछ लोगों को कम काटता है क्योंकि दे कंट्रोल इट, और कुछ को ज्यादा काट लेता है ना. तो मेरे 45 नंबर बन रहे थे उसमें, पर मिले नहीं. गलत हो गया. पर मिले नहीं. Okay. One question Simran is asking, how do you perform on day? Because I am able to solve both the parts of last year too, but I have ruined in the exam in part A. This time I am worried. Good question. We've ruined in part A. So have you given NID? NID will tell you why you ruined. I got my answer from there. Okay. लेकिन मैंने NID क्रैक किया है, ऐसा नहीं है. इंटरव्यू में नहीं बैठा क्योंकि जाना नहीं था, बट मेरे को पता चल गया था कि क्या हो रहा है एग्जाम में, क्या होगा. एंड NID इज समथिंग दैट डजंट टेल यू एनीथिंग. वो 37 क्वेश्चन पूछेगा आधे घंटे में, है ना. So how to perform on the day? Again, yaar, if you have prepared, you will perform. Okay, just do the same thing that you have planned beforehand. I think the best answer will be, if you have clarity, you will perform. Clarity regarding the plan, what you are going to do. वहां पे अगर बैठ के तुम सोचोगे कि क्या करना है, अब क्या करना है, पहले इसे अटेम्प्ट करना है, इसे अटेम्प्ट करना है. Just take care of basic things. Basic things are that all the questions should be looked upon. ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट गया, देखा ही नहीं. ओके, क्या पता आए तुम्हें, है ना. तो सारे सवाल, और अगर कोई भी सवाल एक अप्रोच में नहीं हो रहा, then it is not your question. So be humble enough to leave that question. And it will happen that in a series, in a sequence, you would know 10 questions. You won't know 10 questions. It can happen. Okay, so if it is happening, then don't just get demotivated, because this paper is designed like that. Okay. लास्ट टाइम यही हुआ था मेरे साथ. एक साथ नहीं आ रहे, Exactly. उसके बाद सब गया मेरा हाथ से, ऐसा लगा कुछ नहीं आता. Exactly. So when part A is and you ruin part A, and then you ruin part B also. नहीं, मेरा पार्ट भी मुझे लगा था कि थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है, वो क्या पता पास हो जाए, तो अच्छे से दिया मैंने पार्ट भी. बस पेन रखा और टाइम ओवर हुआ. तो बहुत मतलब ऐसे प्लान्ड नहीं था, बट हाँ मैंने दानिश की वीडियोस देखी थी, तो 1-2 वीक से प्रिपेयर किया था. बट इस बार तो पूरा ड्रॉप लेके प्रिपेयर किया है, तो ज्यादा डर भी है कि पता नहीं क्या होगा. मेरे को समझ में नहीं आता यार, ये डर क्यों आ रहा है. NID भी पूरा इस वजह से क्योंकि तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए तुम डर रहे हो, ये रीजन है. तो फिर
मेरे को नहीं पता, बिकॉज सबको तो नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, हाँ है ना. एंड आई न्यू दैट इन द वेरी बिगिनिंग, है ना. अगर नहीं मिलेगा तो क्या करना है. सो आई थिंक इन वन ऑफ माई वीडियोज आई हैव told this that the goal should be much bigger than IITs Yeah. or NITs, because in my fraternity, if you ask me, nobody asks degrees. मेरे काम में किसी ने डिग्री नहीं पूछा. The recent project that I did with Anjali, she did not ask me from where you are, what you're doing. Portfolio दिखाओ, तुम काम दिखाओ, और फिर मैं तुम्हारे हिसाब से जॉब मिल जाती है. Hmm. Okay. What IITs will do will just put your portfolios on bigger platforms. Okay. See, let me share this with you. Maybe it sounds stupid from here, क्योंकि तुम तो बोल लोगे ज्ञान देने में क्या जा रहा है ना. But see, there are two people who went through IITs, and now very early they get their portfolios on bigger platforms. They get hired, they get good packages. There is other person who won't make it. Okay, so that person, what he or she does, that person goes through a process. Maybe 5 years or 6 years later, that person reaches there. Okay, but that 5 years of hard work, that skill set, and that portfolio that he creates, that work that he creates in 5 years, will make sure that person stays there for longer. Okay, I know these people. Okay, who were much better than me. 10th fail, dude, and they are doing best in animation, Indian animation. Okay. Vaibhav, I mean, I should take the name. Vaibhav Kumar Eshi is one of the legends in animation industry. Yeah, 100%. Yeah, just go and watch his life journey, how he got into NIT. Okay. Achut Palav, the best calligrapher, one of the best calligrapher India has. Okay, he's 10th fail. He actually passed out 10th because he wanted to pursue calligraphy from JJ. So if you have your skill set, if you have your work on point, I don't think so you need any degree. I came here for sheer love of funny, sir, and he went to UPS. Yeah. सेम Suraj told सेम me. सेम मेरे Yeah. साथ भी मैंने पानी सर Yeah. को इतने मैसेजेस किए कि क्यों ऐसा हो गया, मैंने ड्रॉप लिया इसीलिए कि So सर से सीख पाऊँ. yeah. So if the pressure is coming from because I want to go to NIT and IIT, see, life. Shall I say this? Because I'm commenting a lot on other people. I don't see happy faces, dude. Hi. Hannah, I don't see everybody is so stressed out, working so hard, doing something here and there. Happiness ka hai, bhai? Anjali had to make a video on what? Imposter syndrome. Yeah, why? From where? अभी खुशी नहीं रहोगे तो फिर मतलब ही क्या है भाई IIT आने का, है ना? Just ask yourself this question: what do you want to do? एक bigger goal क्या है? कब होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पर क्या रीजन है तुम्हें यहाँ पे आना है? In fact, I posted my first post on Instagram when I got into this college. I have wrote this there. यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, even they don't know, they all are Hanumans. They don't know their capability. है ना? उनको कोई तो चाहिए बताने के लिए कि भाई तू ये कर सकता है. Because most of the people pursuing for packages. Yeah. That's the big talk. I'm not talking about design. I'm talking about MTech students here, PhD students here. People from aerospace are applying in CS. Yes. Yeah. For what? Yeah. What the hell? That's true. That's a big problem. It's a system level problem. So chill out, dude. Chill out. Yes, thank you, Simran. Nilanjan was asking Suraj, while drawing icons, should we detail them or keep it more simple, geometrical shape? It should be comprehensible first, and simple geometrical shapes are identifiable very easily. So I think you should keep it geometrical, I guess. Very simple, but there are icons which are abstract as well. Okay, so use a lot of references, I would say. Consume a lot of visuals. Consume. सिर्फ consumption चालू रखना चाहिए. अपने आसपास icons देखो और compose it in the best possible way in the frame and make it as comprehensible as possible. If it is simplistic, don't do a lot of details. Don't put a lot of details जिसको zoom करके देखना पड़े, है ना? अगले का काम आसान है. तुम्हें पता है ये सारी चीजें ना एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती है. मेरे ख्याल से मेरे सामने जो सबसे सिंपल आइकन दिख रहा है वो गूगल का है, गूगल के कैमरा का ये Gmeet का आइकन दिख रहा है. Now if you look at that icon resonates with the logo of Google, and every icon of Google resonates with it.
Okay, and every shape those icons are using, those icons are trying to convey you something. When you see Drive, when you see Google Meet, every shape, it is a camera out there. Okay, the Drive is a pocket, the mail is a box, so it is conveying you something. This is what I am. Okay, so analyze a lot of icons and copy them. खुलेआम कॉपी करो, है ना. कॉपी क्या होता है, 4-5 चीजों को जोड़ के बनाया तो कुछ नया बनता है ना. एंड नो, दिस इज नॉट आर्ट, दिस इज इंफॉर्मेशन डिजाइन. यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सुंदर नहीं दिखना, हमें अपना काम भी दिखाना है. मतलब जो है वो चीज है क्या, बेसिकली वो पता चलनी चाहिए, है ना. और सबसे बुरी बात क्या होती है डिजाइन की, पता है, एज कम्पेयर टू आर्ट, डिजाइन आउटडेट्स. डिजाइन बदलेगा, डिजाइन का कोई शेल्फ लाइफ नहीं होता, है ना. तुम इतना सुंदर चश्मा पहन के घूम रहे हो, 6 महीने बाद वो फैशन से गायब हो गया, है ना. तो वही है. That's true. Okay, yes. Riya's asking, okay, उसके पहले Vani is asking Suraj, how many attempts did it take? Only one for CEED, right? No? I know the answer already. Yeah. First attempt. Yeah, this was the first attempt. First attempt on entire one. क्या चाहिए life में? Mohit is asking, what was your score in part A? Oh, it's not on Google anymore. Okay, in part A, 36.8. Oof. Almost 37. Cut off last Cut off 24 था bro. हाँ, but उसके पहले 36 जो एम किया था वही आया. एंजाइटी आई थी बहुत ज्यादा कि अब अगर कट ऑफ बढ़ गया तो क्या होगा. तो हो गया, तो हो गया, फिर बैठो, फिर पेपर बोर्ड में काम करना पड़ता. कोई नहीं. Okay, last question. एक एनिमेशन स्टूडियो हमारे यहाँ. हाँ, पता है. Yeah. Last question before we go to Samiksha is Riya is asking, hello, will shading only be applied if it is asked? Otherwise, it's not that necessary, right? Because I don't know how to shade properly. Yeah, it doesn't matter if you know or not, but if it is asked, then do. And if it is not asked, don't do, because it will save your time. Time is the priority. Okay, line drawing conveys. Line drawings are beautiful. Okay, good crisp lines, nice composition, nice labeling. Okay, a 3-dimensional front 3/4 angle of everything that you are drawing. It's enough. Rest everything is your idea, right? Your idea and presentation. Yeah. So if it is not asked, don't do. Waste of time. मतलब किसी से ज्यादा नंबर नहीं मिल रहा तुम्हें, टाइम बर्बाद कर. That's true. Yes, Samiksha. Yes, you can go forward. Thank you for patiently waiting. Hello, Dhanish, and hello, Suraj. Hey. I have a question. What should be our priority while drawing in part B? I mean, more people say that don't put your first or second idea on paper and think about third and fourth. And when I attempted NID, I didn't have that much time. I had to left one question. So what should be the priority? To complete the paper first, then shading, then other things? I mean, what should we do? Top priority is time, and complete the paper first. With your first idea is all right, just complete. Okay, complete the paper first, and the second thing, read the evaluation criteria. Don't work more than the evaluation criteria. Okay, you won't get extra marks for extra handwriting or something like that. If it is not in the evaluation criteria, then it's of no use. And if they are judging you on the basis of lines, then make sure the lines are good. They're not hairy lines. If they are judging you on the basis of composition, because they judge a lot of question papers, they ask that, okay, composition will be watched, will be seen. Okay, so work on composition. So these are the two things first. And then what did you ask after that? Hello. Yeah. What do you ask after that? Actually, ideation, yes. Which idea you should prefer? Yeah. Whichever idea you come up with within 5 minutes. Okay. Actually, if you can come up with 5 ideas in 5 minutes, which is very much possible. Now I am able to do that somehow. Okay. So 5 minutes में अगर तुम्हारे 10 ideas आ रहे हैं, and so you have a library to choose. But make sure that you ideate in 5 minutes. For example, if you see the product design video that I made, there is a concept. Yeah, I have watched today. Yeah, there is a concept which was done, I guess, in how much time, I don't know. Very less time. Okay. 2 concept बनाए थे, एक choose किया था उसमें से. Okay, and throughout the sketches, throughout your final drawing, final lane is the rough drawing that you do.
Okay, you should reiterate your design, because that is the time you're not only just working as a labor, you're also thinking, right? Okay, this is working, this is not working. Because when you are drawing this much and when you're drawing this much, there's a difference. Okay, so if within 5 minutes ideation ho jana chahiye, it is not compulsory that first idea, second idea, third idea कौन सा लेना है. Okay, 5 मिनट में एक ही आइडिया आ रहा है तो क्या करोगे? पेपर तो खाली छोड़ के नहीं आओगे, है ना? अगर 5 मिनट में 5 आइडियाज आ गए, आई डोंट नो यू, राइट? तुम्हारा ट्रेनिंग क्या है मेरे को नहीं पता, तो हो सकता है तुम्हें 10 आइडियाज आए, तो यू चूज वन विच इज द बेस्ट in 5 minutes and you blow it up. Okay, and while doing that you reiterate it, make it more beautiful, make it more proper. Okay, you just don't copy the concept. Keep on thinking how it can be improved while drawing. Yeah. Okay, just get yourself involved in that particular drawing while watching the clock. Okay. If the Thank clock you. is not allowing you, don't do. Strictly respect the clock. Okay, and in the fifth question, I mean, I had last time when I attempted, I wrote all the 5 problems, but I could not draw the drawing. So what is more important? I mean, draw करना ज़्यादा important है या जो problems लिखना ज़्यादा important है? Humankind came up with visuals first. Okay, visuals are more important. So reading something is boring for the professor because he or she is reading so many answer sheets. But looking at the visuals is much more interesting. So make his or her life easy to analyze your answer sheet. Okay. And how will you prepare for something like this? Show your sketches to people who don't have to do anything with design. Okay. If they take interest in your drawings, in your sketches, in your ideas, because you're a designer, right? You will come up with different interesting ideas. So because end product will be reached there. Okay. So if you can convince people around you who have nothing to do with design, they're just reading newspaper at home, and just you go there and you show your sketches to them. Kaisa hai, sahi hai kya, badhiya hai kya, hai na? So if they are convinced, then you will convince the invigilate. And this way you will also interact with a lot of people. Don't close your gates. इससे ना stories मिलती हैं, creative होते हो आप. है ना? ज्यादा लोगों से जुड़ोगे तो फिर ऐसा नहीं है कि उनका सारा डेटा दिमाग में ही रखना है. तुम तुम्हारे दिमाग के ऊपर छोड़ दो, जो चीज तुम्हारे साथ रह गई वो इंटरेस्टिंग है. Okay, actually I have been drawing since childhood. Nice. So people around me likes my drawing, but when I came to know this field and I saw designers' works, I feel like okay, I'm not that good enough for that. Imposter syndrome. Imposter syndrome. Yeah. Hannah, I'm not good enough. Go and watch Anjali's videos. You are good enough. No, I used to think after watching your videos on YouTube, I'm confident enough that I am able to draw that at least in 15 to 20 minutes. So I feel what happens is confident if I start comparing myself with Jangi, I should hang myself here. है ना? कुछ भी मतलब you are comparing with someone because you are exposed to that kind of work. है ना? You don't know what that person has done to achieve that level of accuracy or perfection. है ना? Okay. And in arts, I would like to say that because a lot of people pursue drawing right now from engineering. Engineering से CEED देना है तो drawing सबसे बड़ा issue आता है. तो I'm also engineer, mechanical engineer. So दो तरीके होते हैं, 2 approaches होते हैं. एक दिल का रास्ता, एक दिमाग का रास्ता. दिमाग का रास्ता बहुत technical होता है. That's what I tell you in my videos. What I'm showing you, it is the technical way to learn drawing. Okay. But drawing is also something very much creative. कभी-कभी कुछ creative decisions भी ले लेते हैं हम, और हमें कोई idea नहीं रहता हम कैसे ले रहे हो. Okay, कोई idea नहीं रहता ये आ कहाँ से रहा है. So it is manifesting through you. Okay, it was somewhere out there in the ether and it is coming through you on the paper. Okay, and I have no explanation to tell you how I came up with Meenu. Okay, or some other characters that I have created. है ना? लेकिन technical aspects क्या है? That's what I'm telling you in those videos. 3-dimensional geometry समझ में आना चाहिए. You should able to look through forms.
पर वो तो ट्रेनिंग के बाद ही आएगा, एक टाइम के बाद. इवन आई एम इन द मिडल ऑफ माई ट्रेनिंग. अभी कितना ही दिन हुआ है ड्राइंग शुरू किया. ओके. Hello. Yeah, you're asking me. No, Or I'm just answering no? your question. Okay, Don't get continue. imposter syndrome. Okay, thank you. Yeah. And thank you very much. One more thing. Sure. Actually, in my area, I'm giving exam from Bhopal. So there is Oh. very cold and my hand froze, almost froze before giving exam. So, I mean, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन any निकालना tips चाहिए and something यार. and something about तुम fast shading, तमिलनाडु something. के एग्जाम दो, क्या ही बताऊं. No, क्या करोगे actually, अब? I have already filled form and got my admit card, so that is not possible. I mean, if there is something or that basic shading practice, I mean, as Dhanish said in his video, I mean, Yeah. about lines and circles. So can we do Okay. that before exam? I mean, So when you said, when Danish is it said, I feasible? thought Danish gave you a solution for cold weather. No, not cold weather. Actually, when Okay. I watched his For videos shading, in YouTube. for shading, basic thing you do, you don't have to do a pro shading there. Okay, just separate the tones, the light family from the dark family. Okay, that will tell you your form sensitivity. That's what they want to know. See, जहाँ पे रोशनी गिरेगा वहाँ पे light होगा, जहाँ नहीं गिरेगा वहाँ shade होगा. So if you can just create a border and shade it in single uniform lines, it is more than enough. Okay, and do this if it is asked. वरना मत करना. Okay. और मैं ठंड का क्या ही करोगे? हाँ मतलब मैं ठंड का एक थोड़ा सा सिंपल सा सोल्यूशन बना सकता हूँ कि अब यही करते हैं जब बहुत दिल्ली में बहुत ठंड होती है ना और कुछ करना होता है, स्केच वेच करना होता है, कुछ भी करना होता है, go for a walk or go for like a short, I know it sounds very stupid, go for a 5-minute jog or something, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो या योगा करो, जो भी बॉडी में गर्मी होनी चाहिए बिफोर योर एग्जाम. आई टोल्ड दिस बिफोर आई रेडी आल्सो कि सुबह उठ के ना वो जो बड़ी शीट्स लेके जो लंबी लंबी लाइंस है ना वो प्रैक्टिस करो ना, हाथ खुल जाएगा थोड़ा. तो yeah, one more thing I want to add to that, just don't draw lines. सिर्फ lines draw करोगे तो एक पॉइंट पे बोर हो जाओगे. challenge yourself, because क्या होता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, when we do similar thing over and over, then it is trained कि हाँ अब तो सोचा मैं करते रहता हूँ. Okay, so challenge it. दो dots बनाओ, try to join it in one stroke. Okay, in the very beginning what you will experience is that you are able to do it in one stroke. पास तो join हो जा रहा है, but when you slow the movement of your arm, तो line ऐसा हो जा रहा है ना. So over the period of time you will be better at it. तो वो धीरे धीरे बनेगा सही से, एकदम सेपरेट बनेगा वो. And now do the same thing with 3 dots. Always challenge yourself in these basic exercises also. So make 3 dots, try to join in one stroke. Okay. And now try to do it slowly, and then you will see how much you struggle. Okay. And if you master these things, so line quality का issue तो solve हो गया. और line quality का ये exercises करने के बाद भी अगर तुम्हें precise drawing पे अच्छे lines बनाने, then you have to watch my video, क्योंकि उसमें मैंने explain किया, demonstrate किया how you can do that. But with this exercise being done already, क्योंकि अगर हाथ ही नहीं काम कर रहा, coordination ही नहीं है muscle और mind का, तो फिर क्या करोगे? और कोई टेंशन नहीं है, वो 10-15 दिन के रेगुलर प्रैक्टिस से एक बार सीख जाता है आदमी. अच्छा ड्राइंग नहीं सीखेगा पर लाइन तो बन जाती है अच्छी. Okay. Thank you so much, both of you. Sure. Yes, Suraj, in the character design question, do we have to make use of the whole sheet, or can we use some part of it, as characters don't take much space, and then we can put a border or a frame? Is that fine? The rectangular page is always a border. You don't have to put a border after that. And it is not asked in the question to draw the background, as you know. So it is very much obvious that a lot of area will be revealed. Okay. So watch how things are composed in movies. Because when it is said that you don't have to create background, they don't say that you don't have to create props. Props will also take space and make use of that negative space, like I told about the gun. Okay, if on this screen, this is the gun, make use of this negative space so that it is not wasted. So uske face, जहाँ पे faces है,
ओके, वहां पे डिटेल्स, मतलब जहाँ पे फेस है उसके सामने थोड़ा जगह दो, और जहां पर अगर जैसे कोई शर्ट बना रहे हो तो मेक यूज उसमें डिटेल्स डाल दो थोड़े से, शर्ट बना रहे हो क्योंकि बाकी जगह तो खाली है, व्हाट विल यू डू? ओके, एंड ट्राई नॉट टू मेक कैरेक्टर्स वेरी स्मॉल। ऐसा पूरे पेज पे कैरेक्टर्स, तुम कॉमिक्स देखोगे तो दे हैव, यू अंडरस्टैंड व्हाट कॉम्पोजिशन इज। अगर कॉमिक नहीं देख पा रहे हो तो जस्ट वॉच मूवीज वेयर दे हैव टेकन लॉन्ग शॉट्स एज वेल एज फुल शॉट्स और काउबॉय शॉट्स। आई डोंट थिंक सो काउबॉय शॉट्स बनाने के लिए आएगा एग्जाम में, फुल बॉडी शॉट आएगा, और वो कैसे फ्रेम में कंपोज रहता है वो एक बार देख लेना बस। उतना साइज कैरेक्टर का, स्टैंडिंग कैरेक्टर का होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर दो कैरेक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं बीच में, ओके, सो इफ वन कैरेक्टर इज स्टैंडिंग एंड अदर इज सिटिंग, सो मेक श्योर इट लुक्स लाइक अदर पर्सन इज सिटिंग। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बैठा हुआ है उसकी भी हाइट उतनी है और जो खड़ा है उसकी भी हाइट उतनी है। ओके, वो कॉम्पोजिशन कितना भी अच्छा हो, बहुत बहुत बुरा लगेगा वो। ठीक है, एंड गिव अ थॉट टू व्हाट यू आर ड्राइंग। प्रॉप्स भी तुम्हारे एनवायरनमेंट को डिफाइन करेंगे। जैसे ये जो कोविड टेस्ट वाला जो क्वेश्चन था, स्केच था, आई हैव सीन डिफरेंट वैरायटी ऑफ चेयर्स कमिंग आउट। हॉस्पिटल में नहीं होता वैसा चेयर, है ना, है ना, लकड़ी के चेयर बनाया था लोगों ने उसमें। या आई रियली होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। Yes, ये you सब मैं are. सिर्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया यार हुआ इसका। सूरज वही तो बैठा करता ना यार, Yeah. ऑल लाइक 355 है यार। मैंने उनको बोला लाइंस बनाओ, लाइन प्रैक्टिस करो, सर्कल्स Yeah. बनाओ। तो व्हाट यू सेड एक्चुअली आई डिडंट थिंक ऑफ इट कि हां आफ्टर Yeah. अ पॉइंट ऑफ टाइम कितना ही लाइंस बनाओगे यार। तो ऑब्वियसली Yeah. देयर इज अ डिफरेंस Yeah. बिटवीन समवन हु इज अ प्रो एट दिस एंड समवन हु इज जस्ट लर्निंग। तो फर्क तो है। Yes. योर I आंसर try मच to मोर प्रिसाइज आई थिंक। I try to evade that product design question. Actually, I am in talks with a lot of my product design friends कि ये गलत हो गया, ये कैसे ठीक करें, इसको किसी तरह फंक्शनल बना सकते हैं क्या, क्योंकि वीडियो तो चली गई है। है ना? So I am trying to come up with some solution. कुछ तो होगा। एक और क्वेश्चन ये है, शुड वी कीप एक्साइटिंग or be simple in the creative question? The question 3. Creative question. Approach तो मैंने तुम्हें बता ही दिया. I should not repeat it over and over. Yeah. But I would tell you how you can make it more interesting. Advertising का तरीका है, क्योंकि उसमें ही मैंने बैचलर्स किया था, तो फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे होता है. What these people do is these people batch to entirely different things. Okay. And come up with a third thing. मतलब A is used, B is used, and intention is C. For example, you see that center fruit ad, center fresh का ad. Okay. The ढोलकी जो ढोलक बजा रहा है और जो गाना गा रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है सेंटर फ्रेश के एड से. ओके, उसको कुछ नहीं लेना देना है. लेकिन मेरे पास सेंटर फ्रेश का प्रोडक्ट है. आई हैव A is something that my client wants. B is something that is important, that will make the design work, and C is the output which will have both. So उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है. सेंटर फ्रूट की टॉफी का और इस गाने वाले का और इस ढोलक वाले का कोई लेना देना नहीं है. But now they come up with a story. कि ये ढोलक बजाएगा और पीछे जैसे ही गाना वाला सफर करेगा, पीछे से सेंटर फ्रेश का एक ऐसा बैनर आ जाएगा और चालू हो जाएगा उसका, एंड ही विल विन. है ना? तो ये क्रिएटिविटी यहीं से आती है. यू थिंक डिफरेंटली मतलब इधर देखा लेकिन सोच कुछ और रहा है. ओके, मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम जब कोई पिक्चर बनाते हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि 3-3 घंटे आप एक ही कैनवस को देख रहे हो. तो व्हाट यू डू, यू फ्लिप द कैनवस. नाउ इट्स अ डिफरेंट पिक्चर. Or you look in the mirror. In the mirror. It's a different picture. Now the caption thing. How will you come up with captions? एक तो मैंने कह दिया तुमको, just be aware of your Yes, life. and also there's a follow-up question in the same thing. Caption में 2 लोगों ने पूछा है, are we allowed to write in Hindi or should we strictly stick to English? There is nothing written in the evaluation criteria about this. See, evaluation criteria is your Gita and Bible. Okay, so what you are asking from me कि ये चलेगा वो evaluation criteria में है already. तो हिंदी इंग्लिश नहीं है ऐसा, पर common sense तुम्हारे पास है तुम्हारा. What if the professor doesn't know Hindi? Okay, because we have so many people coming here from different regions of the countries, ethnicities, right? So Hindi is something that South Indian people struggle with. That is why I try to make my videos in English. क्योंकि कन्याकुमारी से DM आता है, उसका क्या है ना? So
आई प्रेफर्ड, मेरे को भी आइडिया आया था कि हिंदी में तो मैं बहुत क्रिएटिव हो सकता हूँ, है ना, आई कैन कम अप विथ नाइस कैप्शंस। तो पर इंग्लिश में करना था क्योंकि मैं चाहता था कि उसको सबको समझ में आ जाए, बिकॉज थॉट इज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज बिकम इज नॉट अ बैरियर एनीवेयर, है ना, व्हेन देयर इज थॉट, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं करता। बात क्या कहनी है ये तुम्हें, तुम्हारे पास क्लैरिटी है तुम्हारे पास। आई गेव दिस एग्जांपल आई थिंक इन वन ऑफ माय मीट्स, द वेरी फर्स्ट मीट, ओके, हाउ यू कम अप विद अ कैप्शन। Obviously you interact with a lot of people, you come up with different stories then, है ना, and those stories will be related to that particular locality, so you come up with a taste of those stories, okay, so you bring those elements in your creativity questions. और दूसरा है you read, when you read you come up with different thoughts of different era, and trust me, the thoughts that still are present around us are still with the thoughts which still sound contemporary are the best thoughts, जो लिख दिया बहुत पहले बट अभी भी ऐसे लगता है कि अभी की बात कर रहे हैं, अभी चल रहा है सब कुछ, ओके, सो व्हेन यू रीड सच कंटेंट, मैं सिर्फ हिंदी पढ़ता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी पढ़ने की, ओके, तो वहां से बहुत सारा कंटेंट आता है, एंड अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी इफ यू वांट टू वर्क इन दिस कंट्री, you have to know English, okay, so functional रहना है तो English जरूरी है आज के टाइम पे, okay, so the example that I want to give is, I don't know how many of you people have seen Dar of Shah Rukh Khan. Dar movie, anybody has देखा है काफी पहले। So Dar movie में Shah Rukh Khan is actually that infatuated Ashik who is behind Juhi Chawla, and Juhi Chawla is what? Juhi Chawla is okay, her love interest, and she is married to someone else. I think Sunny Deol. Yeah, Sunny Deol. So yeah, Sunny Deol, and he gets killed. Shah Rukh Khan gets killed later in the movie. Okay, the whole movie is about Shah Rukh Khan conspiring how to get with this girl. Okay, so the songwriting of this song, if you of this movie, if you see, it is written by Anand Bakshi, and what does he write? He writes just 4 lines, and you don't have to watch the movie. The whole movie is described in those 4 lines. तू है ना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, है ना, that's it, पूरा मूवी यही है, you don't have to watch the movie. So there is someone who has written 4 to 5 lines for a whole damn movie. All you have to do is write a small caption for your own visual which is interesting, okay, so I get inspired from these people. These are way much more creative people than us, है ना। एक और क्वेश्चन है, should we try to make the captions more witty or should we be more serious? यार ये सब मतलब एक मिनट before Suraj answers, मुझे लगता है ना ये सब I just feel it depends on what you've made, it depends on what are you trying to show, वो जो इमोशन और भावना जो तुम दिखाना चाहते हो इलस्ट्रेशन के थ्रू, कैप्शन पूरा उसका इम्पैक्ट चेंज कर देता है। मैंने एक कैप्शंस के सेशन में बोला भी था, सो वो विटी होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, फनी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वो सब डिपेंड करता है कि तुम क्या बना रहे हो। या एग्जैक्टली ऐसा, मतलब मैं अगर चाहूँ कि मैं कॉमेडी कर दूं अभी, कुछ फनी बोल दूं, तो तुरंत थोड़ी निकलेगा कुछ ऐसे, या फिर मैं ट्रेंड कॉमेडियन होना चाहिए कोई जो मेरे सेट प्रॉपर्ली रेडी है, मेरे सब कुछ, कि ये जोक ऐसे मारना है, ये टाइमिंग है, ये प्रेमिस है, ये हुकअप है, और फिर मार देना है जो। सो दीज पीपल हैव अ होल स्ट्रक्चर फॉर दैट, ओके, वो ऑलरेडी प्लान रहता है उन लोगों का, वो अचानक से नहीं बन जाते, है ना। तो ऐसा तुम बेटी कोशिश करोगे बनने का तो नहीं बनेगा वो। Try out what you can come up with. Pallav is asking, what does Kairneya mean? I think even I want to know this. Okay, so I have a Instagram post for it. See, how I am promoting myself. है ना? So you go read. It's a very interesting post. Okay. It's about my mama. Acha. Okay. And Titi has requested to make a different video on creativity approach. I already have a video on creativity. I think the 3rd video. I've extensively talked on it. ठीक है, तो finally it's my turn to ask a question. मेरे पास एक ही question है, और वो question is like a conversation ender for today's session because I don't want to take too much of your time. Yes, Shivangi, you can ask me. मैं पहले Yes, Shivangi. Okay, so I don't know ये question कितना valid है, but personally what I've been facing is after NID, since my NID didn't go well, the anxiety for me it has increased, because of which, like when I draw now, my hands shiver, and उसकी वजह से my lines don't come out clean.
So do you have any tips how to control the hand when you're drawing? Why are you so anxious? I mean, इतना क्या हो रहा है कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? I mean, बहुत कुछ तो हो रहा होगा क्या? I mean, don't tell me here if it is very personal. Okay, but figure out that, है ना? If the fear is coming out of failure, then I mean that is happening with everyone. That's a very personal thing to deal with. कैसे deal करोगे? I used to go to gym. I mean, लगता नहीं है, but I used to go to gym. I used to play with kids. So that distracts you from thinking too much about yourself. I mean, controlling your anxiety is one thing, but the other aspect is where you control your hand movement when you're sketching in general. So do you So have any you told that that hand movement is coming out of that anxiety. That's why I said control your anxiety. हाँ, but मतलब उसके अलावा, like I obviously try to keep myself calm जितना हो सके. So day by day it's getting better, but something else that I should do in order to control that sketching skill. क्योंकि मेरा उसकी वजह से first question एकदम खराब हो जा रहा है, the character sketch question. Okay. Try to draw simple characters. Try to draw make joke of. And what is that series? American series. जो बहुत फेमस है अभी, वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं उसके, जो ऐसे नॉर्मली मूव करते हैं लेकिन बहुत फेमस है, उसका स्टोरी लाइन बहुत सही है. भाई नाम क्या है उसका? नहीं भाई, नहीं है. सिम्पसन. फैमिली गाय नहीं, सिम्पसन्स नहीं, Rick and Morty. साउथ पार्क. South Park? South Park. I have no idea what this is. बहुत डार्क है वो. डार्क है भाई वो, है ना? Try to draw South Park. Okay. And just look, see, because and yet with simple design. Make joke of is an Indian guy. He has 9 million subscribers, I guess, 9 million followers on YouTube. He is from Kanpur. उसका वो यूपी का पूरा लैंग्वेज यूज करके अपने वीडियोस बनाता है ना? तो see, the important thing is not drawing here. अगर तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा मैसेज जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रहा है आगे तक, तुम्हारा थॉट प्रोसेस पहुंच रहा है, देन योर ड्राइंग इज गुड. ओके, सिर्फ जो चीजें तुम अपने साथ फोकस कर सकते हो वो ये है कि डोंट मेक योर पेपर डर्टी. अगर शेकी लाइंस बन भी रही हैं तो ठीक है, एक ही लाइन बने तो बेहतर. डोंट मेक हेरी लाइंस. ओके, है ना? तो हेरी लाइंस मत बनाना. अगर हेरी लाइंस बन रहे हैं तो उसको 4B पेंसिल से, मतलब लाइट शेड पेंसिल से बना लेना और उसके ऊपर एक लाइन बनाना. वन लाइन, ओनली वन लाइन, नॉट मोर देन दैट. ठीक है? और वो अगर तुम्हारा हाथ शेक कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम एंजाइटी यू हैव टू कंट्रोल. ठीक है? दूसरी वजह से अगर शेक कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, उस कैरेक्टर सिंपल कर दो. मेक योर लाइफ सिंपल फॉर दैट, है ना? क्योंकि अभी तुम प्रो नहीं बन सकते एक हफ्ते में, क्योंकि वो चले जाता है एक पॉइंट के बाद, वो चले जाता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है. राइट. ओके, थैंक यू शिवांगी. यस अनिमेश. Animesh was my senior here at IDC. Oh, okay. That was Sharma. Okay. Yes, Dhanish, बोलो. Am I audible? Yes. Yeah. So ये जो प्रोडक्ट सॉल्विंग वाला क्वेश्चन होता है उसमें लोग मेरा जो स्किल है रेंडरिंग का, इट्स लाइक रेंडर करना, मतलब प्रॉपर शेड्स के साथ में. एंड बट दैट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम. लाइक वो मेरे लिए टाइम ले रहा है, तो और वो क्रॉस फैचिंग मेरा जम नहीं रहा है. तो किस तरह से उसको मैं परस्यू करूँ, उसका रेंडरिंग बेसिकली. Rendering as in overall with shading and everything. That's what you're talking, right? So first of all, again, don't shade if it is not asked. Okay, and if you are shading, अभी तो मेरे ख्याल से शेडिंग की प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए कि you should be able to analyze what are lights and what are darks. Okay, if you, I mean, I don't know whether you can see this. Wait, Evaluation criteria में actually surface shading दिया हुआ है. Line and stroke are fine. Like my lines and strokes are fine. Yeah, okay. I have sent you the sketches on Telegram. I think we had a chat. Yeah. So आपने देखा होगा, lines are good, but like वो shading वाला part में ना बहुत time लग जाता है. Yeah, so कुछ तो करो जिससे टाइम बचे. और वो कुछ क्या होगा, वो ये है कि अगर लाइट ऐसे पड़ रही है यहाँ पे, है ना, just mark these outlines. Okay. Step 1 and give unidirectional lines on the shade. That's it. Okay. And one more question है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में जो
ऑनलाइन जितने भी मॉक्स दिए हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ स्पेस दिया नहीं रहता है, तो अपराजिता गेव में फीडबैक लाइक वहाँ पे ना आंसर शीट में 10x10 के बॉक्सेस दिए रहते हैं 10x10 के थे? पता Okay. नहीं। हाँ तो As far शी as I could remember, I think those were rectangular boxes. मेरा मेमोरी बहुत वैसा अच्छा नहीं है, उसको ज्यादा याद रहेगा. हाँ तो शी वाज टेलिंग मी कि लाइक वो दिया रहता है, मतलब वहाँ पे तो वो मतलब हर साल ही दिया था। लाइक धनेश आपके टाइम पे भी आया था क्या वो बॉक्सेस प्रॉब्लम मेरे आइडेंटिफिकेशन में? टाइम पे भी आए थे बॉक्सेस, लेकिन आई कांट रिकॉल कि वो रेक्टेंगुलर थे कि स्क्वायर थे। नो इट्स फाइन कि वो रेक्टेंगुलर है कि नहीं, वो बॉक्सेस थे कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ बिकॉज जितने भी मॉक्स आई एम गिविंग वहाँ पे तो ऐसा कोई हाँ स्पेस गिवन नहीं है लाइक कि इतने स्पेस में बनाओ। See, I तो think boxes थे। in one of the previous conversations in this meet only, I told you think in terms of boxes, think in terms of rectangles. So it doesn't matter if the boxes are given or not. ठीक है, तुम्हें एक शीट तो देंगे जो रेक्टेंगल होगा, सर्कल तो नहीं होगा, बुकलेट सर्कल तो नहीं आएगा, है ना? तो थिंक इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल्स ओनली, फ्रेम्स के बारे में सोचो, तो उसको है ना? कंपोज भी करते हैं तो फिर फाइनल हम बॉक्स बना के ही कंपोज करें, मतलब जितने भी बनाने के लिए एग्जैक्टली बोले। मैं वही बोल के थक गया उस ग्रुप पे हमारे कि इफ यू आर सेंडिंग इमेजेस, डोंट सेंड कि अरे ठीक है ये ड्रॉ कर दिया, खींच के भेज दिया, मेक अ प्रॉपर बॉक्स सो दैट आई नो द कंपोजिशन, बिकॉज आई डोंट नो इन विच यूनिवर्स दिस स्केचेस, यस है ना? सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस विद अ बॉक्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो पेपर खुद ही बॉक्स है, ओके है ना? that helps, thank you. Yeah, and for shading, separate the tones. Step 1 and cross hatch भी क्या, एक simple unidirectional line बना दो, and then एक ही do the डायरेक्शन में details. फॉलो करना चाहिए, राइट? कोई अगर ये है No, the thing is unidirectional is the easiest and quickest way, ओके है ना? तुम ऐसा हैच करोगे तो टाइम लगेगा उसको. So do everything. See, everything that I'm telling you right now is to save your time because you will need a lot of time in exam, है ना? तुमको शायद नीड, अगर एनआईटी दिया है तो तुमको पता चलना चाहिए इस बात का. हाँ एनआईडी दिया था। हाँ, तो एनआईडी में पता चल गया होगा तुमको कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है. या आई नो। So do all the mistakes you have done in NID, don't repeat those mistakes in CEED if you are focusing on CEED, क्योंकि कुछ लोगों का NID भी जाना होता है, तो उनका अप्रोच उनको पता रहेगा. NID पहला एग्जाम होता है. ओके थैंक यू धनेश, थैंक यू सूरज। Thank you. Yes, okay, 10:15 will almost take it 2 hours of Suraj. So मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और ये क्वेश्चन सबके लिए वैलिड है और मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. सूरज, व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट वीक अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस तो किया ही होगा, थोड़ा बहुत स्केच वेच किया होगा, उसके अलावा क्या किया? 7 days before, 5 days before, 2 days before, 1 day before, what did you do? See, when I was preparing for the exam, I was also working, okay, with it. So I had work hours. So by that time, when I was giving CEED, I had a commission to work on. And I told my boss that, okay, I need at least a week off now. Okay. But the thing is, when I have to work on a project, okay, it hits me back of the mind every time because I am a designer and I have to think from the crux of the project. सब मेरे को ही बनाना है. I am also the labor, I am also the boss in my thing. So I have to plan and design it every time. So the approach that I have in real life also for everything, when I'm doing something, I'm totally into it. तो मैं उस प्रोजेक्ट पे था उस वक्त, तो मैं उस पे काम कर रहा था, है ना? और उसके पहले आई हैड एवरीथिंग फिगर्ड आउट. द ओनली एंजाइटी दैट आई वाज गेटिंग वाज ऑफ पार्ट ए. तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू विंग्स ऑफ फायर. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम. विंग्स ऑफ फायर सुना है ना सब लोग? हाँ 100%. विंग्स ऑफ फायर वो जो मतलब वो 4-5 लैंग्वेजेस में इसमें गाने हैं, है ना? एंड इट इज द स्टोरी ऑफ कलाम साहब. So I was on binge listening it every time. So I actually told a lot of people in one of my videos that, listen to these people. They've gone through a hell lot of things. Right. And what do you think? Well, okay, see, I'll be honest with you. There are people who are gifted, there are people who are talented, and there are people who are hard working. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रैंकर्स और टॉपर्स होते हैं, they have to be gifted somewhere or the other. They might be hard working, they must be talented also, but they have to be gifted in somewhere or the other. And obviously not majority of the people who are giving the exam are like that. So what is your like one final before you go kind of advice कि ये हफ्ता सबको क्या करना चाहिए? Because even you know, even I know, skill set से ज्यादा ये mindset का गेम है.
Yes, yes, Yesterday I asked yes. you the question. So इसका ये follow up है. What did you do in the last week, and what do you think these people should do? You know, tomorrow. Tomorrow is the seed week. It's the D week. Tomorrow is Yeah, like yeah, Monday से 6 दिन बचेंगे. So what do you think yeah, these guys should do? yeah. Stay away from negativity. And if negative thoughts come in your mind, and those are valid negative thoughts, for example, you know, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद क्या? Okay, so I had this planned that if I don't get into this college, IDC, because I was only planning for IDC. I am an animator. मैं बाकी colleges में जाके क्या करता? या तो NID, which I couldn't afford, or IDC. And also IDC was there. If I had to pursue animation and my heroes were there at IDC, है ना? तो अगर मैं नहीं जाता IDC, तो what was the next thing that I would do? I had planned it out, because see, hard work is not something that is a problem with someone like me. Animator 1 second के लिए 12 drawing बनाता है. Yes. So hard work is not an issue. So what will I do? I'm an animator. I would go into a studio and I'll work. I mean, have you seen Iron Man 3? You Yes. are a builder, you build. Yeah, you're a builder. You build. You build. You build. So what is the second thing that you do? What you are doing good, what you're good at, you just do that, continue doing that. And I think that this thing that happened to me, it approached to me. I mean, can you imagine? I am someone who is drawing for a living. We don't plan out a career like this ever when we were in 11th, 12th standard, right? So since that very beginning, I'm drawing and I'm trying to make my bread and butter out of it. So two things happen. One, your luck, your passion, and everything is there. That is for sure. Okay. But if you want to stay in the industry, in the market, if somebody is paying on your skills, you have to be damn good there. Because next day you are fired from the job. So I don't know how many of you have that experience. Because I know my production heads, department heads coming to me and they say that this project did not work. I didn't like this. Okay, whenever I was working in an organization. So every time if you will be projected to challenges, and every day is a failure. Yeah. So if you are, and now if you smile in failure, because how much you will cry. Okay, so if you smile every day when you fail, one day success will happen, because every day you can't fail, right? How much you will fail, right? So I was working for how much? $15,000. The first job that I did as an as a pre-production artist. Okay, and I was saving nothing. I was just drawing out of sheer passion. मतलब जाने का स्टूडियो में बैठने का एक सीडी आएगा. सीडी इज द क्रिएटिव डायरेक्टर. वो बोलेगा ओके सूरज आज एक कैक्टस चाहिए, एक पॉट चाहिए और एक बंदूक चाहिए, लिटिल सिंगम के स्टाइल. ओके, सो यू डोंट हैव एनी रेफरेंस. अभी तो तूने 3 एपिसोड पे काम किया है ना, सो यू माइट नो हाउ टू ड्रॉ. They'll assume, and if you don't perform there, you don't get paid. Same thing is with everybody, frankly. Okay, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ है, सबके साथ यही problem. So even if you get into IIT, let's say you get into IIT, and I really hope you get your dream college. You are hired in a very big firm, a very big company. Okay, on the basis of the degree that you have, and obviously if you have the degree from this institute, you have something in you. That is for sure. But now you go there and you don't perform. Now you are an entrepreneur. Okay, if you are an entrepreneur, will you pay someone who is just coming there and I would. Yeah. So that grooming I have, that understanding I have. So these, frankly, shall I say this? These things are very small. CEED did not give me anxiety at all, as compared to the anxiety that I had in my workspace. Because if you don't perform in your workspace tomorrow, they don't have an episode to deliver. The whole team suffers. Yeah. Okay. So imagine what kind of pressure it is. So you have to perform. So this is it comes from my training. So I was at the right place at the right time, I would say. Oh, I mean, this does not happen with planning. I have seen people. I also secretly wrote an AIR one under my desk so that no one sees that. Because I was working in my office, so I did not have a space to just go home and just come back because time crunch. पढ़ाई भी करना है और काम भी करना है, तो एक ही जगह पे रहते थे अब, है ना.
So I had that, but I have seen people filling big balls with it. It doesn't happen with, I guess it won't happen with planning, a lot of planning. तुम सही बोल रहे हो, luck भी चाहिए थोड़ा सा, है ना? So things aligned for me. What I did was I just kept on doing what I was good at since the very beginning, and still I'm doing that. मतलब मेरे को interaction design मिल सकता था. I have a bachelor's degree in communication design, so I have a portfolio for interaction design also, because I also worked in e-learning. So I was designing YouTube videos for a professor of mine. So there, yeah. So थोड़ा सा वेबसाइट का भी काम है, थोड़ा ऐप डिजाइन का भी काम है, तो वो चंक का भी काम मेरे पोर्टफोलियो में है. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पोर्टफोलियो. लोग ना एग्जाम के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं. अभी एग्जाम दे दोगे, कॉलेज जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? जॉब करोगे, राइट? सो मेक द पोर्टफोलियो फॉर अ जॉब. Make your portfolio which is good, which will work in the industry. Okay. And how will you know that? Don't show it to me. Go and apply for a job. You will apply for a job. Yes. है ना? Yes. With the thing that you have made, apply for a job. पैसे मिलेंगे उसके तुमको, है ना? सोचो तुमने interaction designer बनना है, and now you are preparing for CEED. What is the best way to prepare for interaction design exam? Design exam, to work in the industry. So I have seen people who actually leave their jobs. For engineers, it is good because they are doing engineering. Like they are not doing anything related to design. So they leave their jobs and they work and they start studying for CEED. Okay, CEED is not JEE. Yeah, CEED is okay. You don't have books. You study people around you, because end of the day, you have to design for them. Okay. And try to keep in mind that you have to give an exam and what kind of exam it is. So when you are interacting with someone, just try to think, how can I apply this there? Okay. So you get ideas, new ideas. I was watching, I guess, in December, Spider-Man, the movie No Way Home came out, right? No Way Home. I was watching that No Way Home. I got that idea of the caption from there. I would create a lion in the bar and I would write No Way Home. Okay. So these all ideas, all good ideas come from your own experience. And if it excites you, you go out and tell other people and just observe them whether it excites them also or not. And if it is exciting to them also, it works. It works. Okay. So this is how you prepare for these kind of exams from your own life. Okay. Okay. Nice. It's a very interesting and very inspiring story, Suraj. Like, I am very happy to see you do so well, and I'm very happy that you never left your core ambition and your core dream, which is animation design. No, because the inspiration was coming from you. Wow. I saw engineers working for 15,000. And I saw that, okay, you are not happy also. So I'll get 2,000 less, it's okay, but I'll drop. Okay. And then after 4 years of doing engineering, they come to me and they say, dude, you are talented. Hey, you can draw so well. I said, dude, you were studying engineering for 4 years. I was drawing for 4 years. Okay. So गधा भी ठीक हो जाएगा ना ड्राइंग में. 4 साल 5 साल बंदा सिर्फ ड्राइंग ही कर रहा है ना? सब काम धंधा छोड़ के. You won't believe my bachelor's college was in Goa. भाई अलग, I know this, अलग मजा क्या है. So just imagine, I was just drawing in Goa. I was drawing and painting. I secured I guess first position in Inter IIT. What? Even IIT Delhi. Yeah, in canvas painting. Whoa. Because that's what I do. Oh, bhai. Oh. Yeah. Wow. So these things are not actually, these things don't put me on a hype. कि अरे क्या कर रहे हो तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, कुछ भी नहीं होता. You're doing it since. अभी अगर मैं कलारंभ में या फिर ललित कला अकेडमी में या फिर इंडियन आर्ट सोसाइटी में जाके फर्स्ट आऊं, then वो जो प्राइड होगा वो अलग होगा, वो नेक्स्ट लेवल का प्राइड होगा. Because now you are one of the best in your fraternity. But I am also a designer, तो ये भी मेरा fraternity है. Yeah. That's true. Yeah. Anything else? Anything else? Thank you so much, Suraj, for giving your time. And yeah. Everybody, we can't have like an applause here, but send hearts for Suraj in the chat box. Hey, सब लोग दिल भेजो. So मैं भी दिल भेजूंगा.
you have drawing space, you can always send your sketches there, and you can get one-liners because time बहुत कम है, वो लोग बहुत ज़्यादा है ना, You're getting so तो many hearts. one-liner reply मिल जाता All the है. Hey, hearts thank you coming so to much. you. Thank you so much. Thank you so much, Suraj. And I'm very Yeah. glad that Anshuman texted me. He said that he couldn't get home in time. So I said, Yeah. okay, we'll do it tomorrow. No stress, tomorrow or day after. Yeah. So, okay, lots of hearts coming in. Instagram live का मेरे को डेजा वो है. कल भी यही हुआ था. You should, Suraj, you know what happened yesterday? We told you कि एक डेढ़ घंटा और थोड़ी चलेगा, पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है. And you left, and the live actually went on for another 1.5 hours. मेरे को मेरे रूममेट्स आके बोलते हैं, क्लासमेट्स आके बोलते हैं कि भाई तुम 5 घंटा क्या कर रहे थे, यू वर वर्किंग ऑन अ मूवी राइट. सो आई सेड नो, आई वाज नॉट देयर. Thank you so much, guys. Thank you so much for all your hearts. कल तो मजा आ गया था यार बहुत. So we'll do one more session with Suraj for the portfolio once this exam gets over. Portfolio के time पे Suraj, I will trouble you once again for another hour and a half. Yeah, sure. We can do a Sure. session. And one thing, guys, these hearts really matter to me, but your follows on Instagram will matter me a lot because that's how I get my jobs. Yes. So if the numbers are good there, and please do that. And trust me, I'm not going to waste your time. And please subscribe to his channel also because he's doing a great job. Like all of us are trying. Yeah, I mean, okay, yeah. But Instagram for sure. Instagram for sure. Please send in your Instagram in the group. Saurabh once. It's Suraj once. Kairneya. It's Kairneya. Okay. Yeah, I'll do it. Okay, and guys, see you tomorrow, same time, 8:30. Tomorrow, I don't know who's coming, but suddenly 3-4 people have agreed. तो मैं कल देखता हूँ जो कल फ्री होगा. So this week is going to be this way only. जो भी 6 दिन है, 6 दिन में 6 episodes. We're going to end with Anjali on Saturday night. Saturday night को Anjali होगी for sure. Me and Anjali will do a one night before CEED like we did last time. And we started with a banger with Suraj. Then we have Anshuman, we have Apayajita, we have Prince, we have a lot of other people. जो लोग फ्री है वो आ जाएंगे. So we'll do a session tomorrow 8:30. Cool. Yeah. Icons वाले जैसे वो लाइव टास्क नहीं करेंगे. Icons वाले टास्क करने हैं. I'll try to fit that in also जो हमने last time किया था. I'll fit it in. वही साथ में कर लेंगे ना क्योंकि क्या प्रेम क्या बोला? अपराजिता के साथ कर लेंगे, वो आइकन्स उससे काफी अच्छे थे अभी इंस्टाग्राम पे. ठीक है I'll speak to her if we can merge that those two together. करते पक्का करते 100%. This week I am going to do a meeting and a session every day. 100%. ठीक है चलो. Thank you so much guys. Thank you for 130 people for staying here. Thank you Suraj. Thank you so much for doing this. Guys, leave मत करो. Before Suraj goes, we're going to take a screenshot and I am going to put that on my LinkedIn. So let me just change the layout. And हाँ, जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हो कैमरा ऑन करो जल्दी फटाफट. Everybody कैमरा ऑन जल्दी. Yes, which you can see all the faces now जो नहीं दिखे थे पहले. I'm giving you guys 1 minute. Not 1 minute, 30 seconds. जल्दी कैमरा ऑन करो everybody. Fast. जल्दी. I can see. तुम्हारे स्क्रीन पे कितने लोग आ जाते हैं एक बार में? Okay, you can zoom out change, or zoom in? No, you can change the layout. So go to those 3 buttons. Go to the cake and go to change layout. And in change layout, you can drag that entire bar towards how many people you want. Tiled. Oh, so nice. I can see that you are enjoying being text. अरे भैया सही है. Okay, cool. So I'm going to take a screenshot. 1 second. So many people. 1 second. I क्यों होगी मेरी? एक सेकंड. Sorry guys. मेरा मैक थोड़ा ना हो गया पुराना, so it's lagging a bit. इसके लिए कल भी मेरा सेशन नहीं हो पाया. Yeah. Now the layout has changed. Okay, everybody, guys, smile. जितने भी लोग हैं यहाँ पे smile. Smile. Suraj, you have to smile too. So I'm always smiling, dude. I समीक्षा ने चैट में के मेरे को छुपा दो क्योंकि मैं सबसे नीचे आता हूँ ना. एक मिनट. Oh. हाँ. Okay. Smile. Okay, done. See you guys. Bye. Good night. मिलते हैं कल. Bye. Good night. Thank you Suraj. Thank you so much. Love you. मिलते हैं बॉम्बे आऊंगा तब. Yep. Okay. Bye. Good night. Dhanish, are you there? Hi, I'm here. बोलो.
Yes, Mandar. Before leaving, can you reply? I have sent you something Yes. on Telegram. I know. I have to reply to you and 4, 5, 6 other people. जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है वो स्टार्टअप के इसके लिए. I have divided into slots. जिन्होंने भी मैसेज किया ना, तो मेरे को कल और आज जीसी का प्रैक्टिस था, तो I wasn't able to take those sessions. I'll do it tomorrow, one day after. Don't worry. मैं सबको टास्क दूंगा और सबसे एटलीस्ट इनपुट तो लूंगा, उसके बाद ही डिसाइड करूंगा. Don't worry. Okay. ठीक है? Cool. You and everybody else who's applied for that startup to work in my startup, please relax. मैं सबके पास अपडेट. ठीक है? Cool. Okay. Bye. Good night. See you guys. Good night. और रिकॉर्डिंग यहाँ बंद की जाएगी.